उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने ये बात आज बोली। सर, जहां तक बिल का सवाल है, मैं बिल के बारे में सेक्शन 3 के बारे में बोलना चाहता हूं। और मगर बिल के बोलने के पहले मैं वाजपेयी जी को कोट करना चाहूंगा। जब नेहरू जी की डेथ हुई, उसी के बाद जब वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी के बारे में क्या बोला, एंड दिस इज रिकॉर्डेड सर, आई हैव अ कॉपी। जिस भारतीय लोकतंत्र में उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया। आज उनके भविष्य के प्रति आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गया, सूर्यास्त हो गया, तारों की छाया में हम अपना मार्ग ढूंढना है। So this is the kind of person Nehru ji was. What I am trying to say is only this, sir. We must in our country learn to respect our past. We must learn to respect our leaders. Sir, गलतियां collectively, individually सबसे होती होंगी, but to blame somebody after 40 years, I would say, would be something which hurts all of us, nothing more than that. Sir, I stop. As far as this is concerned, I stop here, sir. Now, as far as the legal points are concerned, sir, आपने एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बनाया। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या किया सर? आपने 2 सीट्स लाए फॉर माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस्ड पीपल। डिस्प्लेस्ड पीपल में 90% आर कश्मीरी पंडित्स। प्लीज कंक्लूड सर। अभी तो 3-4 मिनट हुए सर। मेरे को बोल लेने दीजिए। योर टाइम इज ओवर। मेरे को बोल लेने दीजिए सर। ऑल राइट, यू विल गेट इनटू द अदर टाइम। ओके, गो अहेड। तो मेरा ये कहना है, आपने क्या किया उसमें? आपने जो लॉ ऑफ अमेंडमेंट लाए, उसमें जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो बेचारे कश्मीर में रह रहे हैं, उनको कोई एडवांटेज इस नॉमिनेशन का नहीं मिलेगा। जो लोग 89 के पहले कश्मीर छोड़ के गए हैं, उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा सर। और मेरा ये भी कहना है सर कि जो लोग गए हैं और जो वहां पर जिनके लिए हमने ये किया है, क्या वो उनके सक्सेसर इन इंटरेस्ट को भी नहीं मिलेगा। मतलब ये वन जनरेशन वन टाइम एक प्रोविजन बनाया है। आपने पीओके के जो लोग आए थे, विस्थापित हुए थे, उनके लिए जो प्रोविजन बनाया था, उसमें सक्सेसर इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन किया, मगर कश्मीरी पंडित्स के लिए प्रोविजन नहीं किया। और मेरे को सबसे बड़े दुख है, जो 5-10 हजार लोग वहां रहते हैं, जिन्होंने सब कुछ झेला, आज भी जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, उनकी हम डर देखते हैं, समझते हैं, उनको इस प्रोविजन का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत दुख की बात है सर। और स्पेशली वो एक बहुत ही बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसने कश्मीर में सब कुछ इतनी सब होने के बाद भी कश्मीर को नहीं छोड़ा सर। और दूसरी बात सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कश्मीर में जो लोग छोड़े गए थे, जो लोग वहां से निकले थे, उनकी संख्या भी जो बताई जाती है ऑफिशियली, वो कम बताई जाती है। मैं आज तक टीवी में सुन रहा था बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को, वो कह रहे थे करीब 5 लाख व्यक्ति कश्मीर छोड़ के उस वक्त गए थे। आप कहते हैं 40,000 फैमिलीज, हम लोग कहते हैं 80-60,000 फैमिलीज, बट रियली स्पीकिंग इट वाज अबाउट 4 to 5 lakh पीपल, एंड दे वर नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स, दे वर अदर्स आल्सो। और अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, अलग अलग समय पे गए, कुछ शुरू में गए, कुछ बीच में गए, कुछ बाद में गए। बट द फैक्ट इज सर, कश्मीर की जो ट्रेजेडी थी वाज इमेंस, बट आज तक उस जेनोसाइड का सर किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ सर। कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार लोग गए, वहां भी कुछ नहीं हो पाया सर। आज कश्मीरियों का ये दुख है सर, इन लोगों का दुख है कि हमारे साथ इतना बड़ा जेनोसाइड इस कंट्री में हुआ, मगर आज तक कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। कुछ केसेस में हुए, कुछ थोड़े बहुत केसेस में हुआ सर। तो मेरा ये भी कहना है कि एक कमीशन भी बैठना चाहिए। अब तो दैट इज कश्मीरी पंडित्स का, मैं कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहा हूं। आप डिस्टर्ब करने से कुछ होता नहीं साहब, डिस्टर्ब। वन सेकेंड। मान्यवर, इस विषय पर उनको 5 मिनट ज्यादा दीजिए। मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी मांग रही है। अभी समझाई है।
क्या कुछ नहीं समझा है? Okay, Mr. Tanka, please. सर, मेरा कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडितों की आवाज उठा रहा हूं। हम लोगों को दुख है, हम सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं गए, कई बार सुप्रीम कोर्ट गए। वी वांटेड एन इन्वेस्टिगेशन, वी वांटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। आज तक हमको नहीं कमीशन ऑफ ना इंक्वायरी दी गई, ना हमारे साथ कुछ किया गया। सर, आज ये दुख आज हर कश्मीरी पंडित के जहन में है, चाहे देश में रहता है, चाहे देश के बाहर रहता है। सर, इसके अलावा सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी कभी हम लोग को ऐसा एहसास होता है कि होम मिनिस्टर साहब हम लोग से नाराज है। सर, कश्मीरी पंडितों से ऐसा कश्मीरी पंडितों में एक इम्प्रेशन है, शायद अगर वो हम लोग ने जब भी मौका मांगा मिलने का, कई दफे मांगा, तो शायद वो हम लोग से नहीं मिलते हैं, ऐसा इम्प्रेशन है। मैं तो चाहूंगा कि किसी दिन कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से वो मिले और उनकी उनकी दिल बीती सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग सर पीड़ित एक सेक्शन है हमारे। हम लोग अपने अपने we are the only people in the world sir जो who are displaced in their own country। हम जो लोग जाते भी हैं वो टेम्पररी जाते हैं, ज्यादा दिन के लिए नहीं जा पाते, जाते डरते हैं, कोई सेटल नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं करता है वहां पर। तो समवेयर आप जो जिस काम की बात कर रहे हो, दैट्स अ वेरी अनईजी काम। इट्स नॉट अ काम जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल पीस। तो समवेयर मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज अ चांस where the country, the community and the country implores कि आप हम लोगों से बात करें, हम लोगों की कठिनाइयां सुने और हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सर, इसके बाद शॉर्ट में मैं बोलना चाहूंगा, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को नहीं मिलते, उसकी समस्या है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सर इन सब चीजों में, मैं इतना ही बताना, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेचारों को ये नहीं पता है कि वो किस स्टेट है नहीं, यूनियन टेरिटरी के उनके बेनिफिट मिलते नहीं। आज उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जो मिल सकती हैं एज ए यूनियन यूटी कार्डर की, वो नहीं मिलती, तो दे आर नॉट यूटी कार्डर पर से। यूटी बन चुके हैं बट यूटी कार्डर नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किए, बिजली की बहुत वहां कमी है, गवर्नर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत, मगर महंगी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। तो कश्मीर में बहुत पीड़ा है सर, कश्मीर में बहुत दुख है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, कश्मीर के दुख के बारे में और गहराई से सोचिए। कश्मीर आपका है, देश का है, था, है, रहेगा, और कश्मीरी पंडित आप लोगों की सरकार के साथ ऑलवेज खड़ा था, खड़ा रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। Dr. Sudhanshu Trivedi, 15 minutes. माननीय सभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक रखा गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था। परंतु यह कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते। और सभापति महोदय, आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था, नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा। वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई तो अगस्त 2019 में उससे मुक्ति मिली। 3 प्रकार की समस्याएं कश्मीर के पास रही थी, जिसे हम 3D कह सकते हैं। डिलिमिटेशन थी, डोमिसाइल थी एंड डेवलपमेंट।
हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया और जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित न्यायपूर्ण न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 के विधेयक के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 90 किया गया, जिसमें 6 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थी परंतु शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं थी। इसमें पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की गई हैं और अब जम्मू में पहले 37 सीटें होती थी, अब 43 होंगी और कश्मीर में इससे पहले 46 और थी, अब 47 होंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यथावत रहेंगी। नामित सदस्य पहले 2 थे, अब 5 होंगे, जिनमें की 1 महिला और 1 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हम अब व्यवस्था को न्याय संगत और युक्तपूर्ण प्रतिनिधित्व की तरफ ले जा रहे हैं। परंतु सभापति महोदय, जो गृह मंत्री जी ने आरक्षण का विषय रखा है, जब ये बात हम करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि पहली बार अब जाके 2019 के बाद वाल्मीकि समाज को अपना बहुत समुचित स्थान मिला है। दुख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां जन्म से यह तय था कि जिस व्यक्ति ने जो व्यवसाय किया है, यदि वह सफाई कर्मचारी थे तो उनके बेटे बेटी सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, चाहे वो पीएचडी क्यों ना कर लें। सोचिए, ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्र भारत में चलती रही और उससे मुक्ति का मार्ग अब जाकर प्रशस्त हुआ है। एक वो थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ ये किया, एक हमारी सरकार है कि जब भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है तो उस परिसर में महर्षि वाल्मीकि का भी एक मंदिर बन रहा है। ये हमारी सोच और उनकी सोच में यह अंतर है। विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ जम्मू कश्मीर आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 70% आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। 9 साल पहले सिविलियन जो कैजुअलिटीज थी उनमें 72% की कमी आई है। सुरक्षा बलों में 60% की कमी आई है। 2010 में जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी 2654 होती थी, अब 2023 में कोई नहीं होती। 2010 में 112 लोग पत्थरबाजी की घटनाओं में नागरिक मारे गए थे, 2023 में एक भी नहीं है। 2010 में 6235 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए थे, 2023 में एक भी नहीं है। और 2010 में 132 ऑर्गेनाइज स्ट्राइक हुई थी, 2023 में कोई भी नहीं है। 2010 में 70 घटनाएं हुई थी सीज फायर वायलेशन की, 2023 में 2 हुई हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर एक भारी बदलाव और एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहा है और इसके लिए विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता हुआ जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद जो कश्मीर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीएसडीपी था, जो 1 लाख करोड़ रुपए था, वो 5 साल में बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किए हैं, जिसमें 29,813 लोग अब तक रिक्रूट किए जा चुके हैं और एडिशनल 5,523 वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। जम्मू कश्मीर ने इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए हैं वो 66,000 करोड़ रुपए के हैं और जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो 2.9 लाख तक के व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। 2 मेडी सिटीज जम्मू और कश्मीर में क्रिएट की जा रही हैं। इस ढंग से स्थानीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऊखू गांव अब पेंसिल वाले गांव के रूप में पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है और इसी के साथ साथ हिमायत स्कीम जैसी योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने जीआई टैगिंग भी की है। सैफरन यानी केसर, जिसके लिए कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है, उसमें और बासमती राइस की जीआई टैगिंग की व्यवस्था की, जिससे कि उसको एक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एक मान्यता प्राप्त हो सकती है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई है, जिसके द्वारा अनेक प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कल्चरल एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो दिवाली शारदा देवी टेंपल में 75 साल के बाद पहली बार मनाई गई है और कश्मीरी पंडितों का प्रसिद्ध त्योहार नवरेह इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है और हमारी गवर्नमेंट आने से पहले कुल 14 लाख टूरिस्ट आते थे। 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटक आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कितना। आगे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पहली बार 30 साल के बाद 27 जुलाई को शियाओं का मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे अकीदत के साथ चला। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं,
मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। वहां भी मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे। इनकी सरकार के समय में शियाओं का जुलूस, मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था। 22 साल तक रुका रहा। जब हमारी सरकार आई उसके बाद वहां पर शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलने की स्थिति आई। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार सभी समुदायों को समान रूप से उन्नति का अवसर देती है। और 30 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से सूफीज्म के 4 बड़े सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। एक का भी कोई मरकज बचा हो तो बता दीजिए। बहुत से लोग विवादित ढांचा गिरने की बात करते हैं, मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जला के ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये वो भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है, तब यह समस्याएं नजर आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, लद्दाख में सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज भी बनाया गया है, और इसके अलावा IITs, IIMs और 2 एम्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले 158 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, अब 8068 किलोमीटर की सड़कें बनी हुई हैं। परंतु इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के शासनकाल में आने के बाद अब मॉर्टेलिटी रेट जो 22 पे था वो अब 14.3 पे आ गया है। पहले केवल 47 जन औषधि केंद्र थे 2019 से पहले, अब 227 हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो 1315 मीटर का है, वो आज चिनाब नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। यह दर्शाता है कि कश्मीर किस नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बचपन में जिस जमाने में कश्मीर में आतंकवाद फैला था, तो हम लोग कहते थे झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम है वितस्ता और चिनाब का है अक्सिनी। तो हम कहते थे बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा, क्यों झुलसता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। आज मोदी जी की सरकार आने के बाद हम कह सकते हैं, पर आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अक्सिनी पर हमारा जो उभरता जा रहा, जो निखरता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। अब मैं एक और भी बात यह कहना चाहता हूं कि 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। G20 जिस शानदार तरीके से हुआ वो हम सब ने देखा। परंतु यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह विषय इतना आसान नहीं था जितना समझा जाता है। जिस समय आतंकवाद शुरू हुआ था, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या उस समय हुई जब श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी। वो तो लोगों को याद होगा। मुझे याद है मान्यवर, बचपन में बहुत से लोगों को नहीं याद होगा, वर्ल्ड कप 1983 का जीतने के बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल कहां हुआ था? 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। और वहां पर भारतीय टीम के खिलाफ नारे, चलिए वो तो अलग है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारतीय टीम के लोगों के ऊपर चीजें फेंकी गई, पिच खोद दी गई। उस समय तो सर्वकालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें विपक्ष मानता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था। परंतु उसके बाद ऐसा दौर भी आया कि वो सब लोग आरोप से छूट गए। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा था, कुछ गलतियों के बारे में कहा था, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि साहब गलतियां अगर हैं तो इस बारे में चर्चा कर ली जाए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर गलतियों की बात होगी तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आज आवश्यकता है। मैं सिर्फ 1-2-3 तथ्य लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था, तो केवल कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा? नंबर 2, 1946 में महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध विद्रोह के आरोप में जब शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे, तो पंडित नेहरू स्वयं उनको छुड़ाने के लिए कश्मीर गए और वो भी गिरफ्तार हो गए। यह बात मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है कि इससे तत्कालीन कांग्रेस नेता बुरी तरीके से हतप्रभ हो गए। और इस परिस्थिति में
जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया उसे कबायली आक्रमण क्यों कहा गया, सेना का आक्रमण क्यों नहीं कहा गया। और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय यह कश्मीर का संघर्ष हुआ, एक फैक्ट रखना चाहता हूं, उस समय तो माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय थे। भारत की सेना अध्यक्ष जनवरी 1949 तक जनरल रॉय बूचर था और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष जनवरी 1951 तक अंग्रेज था। तो भाई यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या आवश्यकता थी। गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई उनको 1 साल तक माउंटबेटन को इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले रिजॉल्व करने हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था। जब यहां थे, दोनों तरफ के सेना अध्यक्ष भी अंग्रेज थे, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए। इसलिए मैं कह सकता हूं एक गलती नहीं, भयंकर गलती थी, जिसका खामियाजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और फिर इतना ही नहीं, करेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल से बहुत स्पष्ट है कि वहां लिखा जा रहा था कि रेजिडुअल पावर्स विल बी वेस्टेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सरदार पटेल के इंसिस्टेंस के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट कर दिया गया। अगर रेजिडुअल पावर्स उनके पास वेस्टेड होती तो आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। और ये करेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945 to 50 के खंड 1 में जो वी शंकर उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस बात को लिखा है। अब मैं एक बात और ध्यान देना चाहता हूं कि प्रथम लोकसभा में कश्मीरी पुनर्वास के कैबिनेट मंत्री अजीत प्रसाद जैन जी ने अपनी किताब कश्मीर व्हाट रियली हैपेंड में लिखा है कि द ड्राफ्ट वाज अप्रूव्ड बाय शेख एंड हिज कोलीग्स एंड देन पास्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे। और इसमें अंत में एक और व्यक्ति का उद्धृत करना चाहता हूं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि उस समय कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आकर कहा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो पत्र लेकर आ गए थे, परंतु उसके बावजूद 2 दिन तक सिर्फ इसलिए मामला अटका रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस महाजन ने अपनी किताब लुकिंग बैक में लिखा है, चूंकि नेहरू जी की यह शर्त थी कि शेख अब्दुल्ला का पहले स्थान तय हो जाए नई सत्ता में, इसके उपरांत ही कश्मीर के विलय का प्रस्ताव होगा। वो सारी बातें आपको पता होगी कि जब समय उन्होंने कहा था कि हम जाकर कराची चले जाएंगे यदि हिंदुओं की रक्षा की गारंटी श्रीनगर में फंसे हुए लोगों की ली जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसके लिए एक दिन नहीं, एक सत्र भी कमजोर पड़ जाएगा। और आज अगर आप देखें कि अंतर देखिए, एक उधर का कश्मीर और एक इधर का कश्मीर। एक इधर का कश्मीर है जहां पर टेक्नोलॉजी में, जहां पर की कल्चर में उन्नति हो रही है, जहां विकास हो रहा है, G20 किया जा रहा है। और एक उधर का कश्मीर है, यहां हमारा सबसे ऊंचा पुल है और वहां बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ उधर के कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन 75 वर्षों के बाद जो कुछ भी बदलाव आया है वो इस सीमा तक आया है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने हिम्मत दिखाई उसकी वजह से आज ये बदलाव आया। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। और इसके लिए जिस सर एक बस पंक्ति कह देता हूं, इसके लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी वो हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर उसका समर्थन करिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और इस समय बर्फीली हवाएं वहां चलती हैं। तो यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर बढ़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। धन्यवाद। श्री मोहम्मद नदीमुल हक, सर 8 minutes. 1 minute. 8 minutes. Thank you. Sir, thank you very much for giving me a chance to speak on the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill. Sir, Kashmir is a cradle of dreams. It is the sanctuary of hope for 13.6 million Kashmiris. Kashmir is the jewel in the crown of India. The government, sir, has made a habit out of bulldozing legislation. Of every 10 legislation, 3.5 are ordinances. But I hope this House deliberates on Kashmir.
let our deliberation be more than just jumlas and election gimmicks. Let them be the resounding voice that calls for justice and the recognition of the Kashmiri people's right to adult franchise and to be governed by their elected representatives. Sir, what Jammu and Kashmir and the Union of India had, and I stress had, was a special understanding of the unique historical and cultural identity of the people of Kashmir and a deep sense of constitutional respect. What is the government's rationale behind the lieutenant governors nominating members to the state assembly? I ask, sir. This indicates that the government has no intention to conduct elections. The nomination of these members ideally falls within the purview of the elected state legislative assembly. This contradicts the Supreme Court's verdict on Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The verdict dated today specifies that election to the legislative assembly cannot wait for the restoration of statehood. Sir, this bill reflects the government's profound disregard for the constitution, parliamentary democracy, and the people of Jammu and Kashmir. While the bill was being discussed in Lok Sabha, there were mentions of the flag being hosted and movies being screened in Kashmir. Years ago, in the very same house, Srimati Sushma Swaraj had said that ordinary men are not affected by fancy things. Sir, the ordinary people of Kashmir are affected by ordinary things. In the freezing winters of December, ordinary rural wage workers in Kashmir are affected by the unemployment rate being over 21%, one of the highest in the country. In the freezing winters of December, ordinary families in Kashmir are affected by the 12 to 16-hour long power cuts. So please remember that this is the longest the state has seen in 2 decades. In the freezing winters of December, 66% ordinary villages in Kashmir One are second. affected. Honorable member. Honorable. मान्यवर उनका पत्ता बदल गया, शायद 90 का सब कुछ पढ़ रहे हैं, 1990s के दशक का पढ़ रहे हैं, आज का नहीं पढ़ रहे। 15 घंटे का पावर कट कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? भैया कुछ तो तथ्य के साथ बोलिए। शायद आपको मालूम नहीं है, पहला विंटर गत साल देखा जहां 3 घंटे का सिर्फ पूरे विंटर में पावर कट हुआ है, ये जम्मू कश्मीर। Honorable member. Minister to say all this in his reply. I would request the minister to be gracious to listen to all this and reply to all this Okay. rather than interrupt the member. Honorable member. एक सेकंड मान्यवर, मैं कब का धैर्य से ही सुन रहा था, मगर धैर्य का भी एक सीमित सीमा होता है, धैर्य का भी सीमा होता है। मैं इतना धैर्यवान नहीं हूं कि झूठ पर झूठ सुनता जा रहा हूं। Honorable member. सर, हम लोग तो उनको सुनते हैं हर वक्त। सर, फिर भी सर, in the freezing winters of December, ordinary families in Kashmir are affected by 12 to 16-hour long power cuts. I repeat. Sir, please remember that this is the longest the state has seen in 2 decades. In the freezing winters of December, 66% ordinary villages in Kashmir are affected by not having access to functional household tap connections. Sir, in the freezing winters of December, as we sit in the comfort of these chambers in New Delhi, let us not forget the biting cold that seeps into the bones of those in Kashmir, grappling with the basic necessity of employment, electricity, or clean water. Sir, when the government speaks of representation and expression of people's mandate, it reeks of double standards. I ask this government, whom does it aim to serve by crushing academic and political dissent? Why did India rank 161st out of 180 countries in the Press Freedom Index? Why do studies show that in more than 198 serious attacks on reporters between 2014 and 2019, 40 journalists were killed? What a shame.
Sir, the government wants states to follow the center. But how can we expect state legislatures to be accountable when the legislature of the union, that is the parliament, sends only 1 out of every 10 bills for scrutiny? How can we expect state governments to function effectively when the union government refuses to release funds that rightfully belongs to them? Since December 2021, the government at the center has blocked more than 18,000 crores for Bengal under Manrega, Awas Yojana, Gramin Sadak Yojana, and National Social Assistance Program. Despite continuous protests, letters, and appeal from my party leaders, members, and wage workers, there has been nothing but silence. Instead of cooperative federalism, our efforts have been met with a deafening lack of response. This is not Sabka Saath, Sabka Vikas. This is Kuch Logo Ka Saath, Kuch Logo Ka Vikas. The government's politics are based on exclusion, but it will not work in West Bengal because the children of Bengal sing with their heads held high. Honorable member, confined to the subject. Okay, sir. Sir, You have gone too far. Okay, sir. I accept your. You have just 2 minutes left. Please come back. Come back to the subject. Sir, Please come back to the subject. the government is boasting that everything is idle in JNK since 2019. Sir, I remind the House once again that it is not just about tourism. Allow me to share 4 points. That the solid waste management under Swachh Bharat mission, so more than 60% villages do not have it in Kashmir. Under Ayushman Bharat, 7,000 ineligible beneficiaries and 3 lakh incorrect household IDs have been found. Under Ujjwala Yojana, sir, there is below average consumption. Sir, yet the government boasts of normalcy. So how can the government boast of normalcy in the people of Kashmir are engulfed in chilling embrace of unrest and uncertainty? Sir, I only say that this is not about politics or mere tokenism anymore. This is about the fate of 13.6 million Kashmiris whose destinies are determined by everyone but themselves. I end, sir. Yes. नक्श है हर जुल्म जिसका वादे कश्मीर पर उसने दहशतगर्द लिखा अमन की तस्वीर पर कहाली की लग गई दिमक हर एक तदबीर पर इत्तेफाक करके रह गया हर कश्मीरी तकदीर Sri M. Mohammad Abdullah, 6 minutes. 6 minutes. Thank you. दो 2019 के पहले Sir, give me a fresh time, sir. 370 और उसके रिस्ट्रिक्शन थे 4% घरों में था आज 70% घरों में नल से जल है 2 साल में 100% हो जाएगा उज्ज्वला में 100% घरों में आप जो आंकड़ा देखें और इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि टूरिज्म का कोई मतलब ही नहीं यानी ये मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीर में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है जब 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आते हैं और ये कह रहे हैं टूरिज्म का कोई मतलब नहीं है ये स्टेटमेंट इस उच्च सदन में होना क्या हमारे कश्मीरी भाई बहनों को मैसेज जाएगा सर कृपया करके आप देखिए Honorable members, you all are aware, I had indicated several times and enforced it, that this house is not a platform to drop any information. We can't be loose cannons. Anyone who makes a factual assertion is under obligation to authenticate it. Now, since an exception has been taken by the Honorable Minister to the figures imparted by the Honorable Member, I call upon the Honorable Member to authenticate the figures he has imparted during his address. Yes, please. Sir, I want to start my fresh time, sir. I'll take care of it. Go ahead. Thank you, Honorable Chairman, sir. 6 minutes. I rise to oppose the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment 2023. Sir, let me begin my speech with a message about my late father, Sir Muhammad Ismail. He promised a charitable trust that he would undertake payment of electricity bill. After my father's demise, I undertook the noble cause of paying this bill for the last 6 years. Though I have no obligation to do that, I am paying even now because I am doing this as a son
who belongs to this great culture of our country to keep the promise of our elders. Sir, I was born into a Muslim family and I follow the culture and practice of this land. Some cultures, faith, practices of this land were followed by the people who were born here, irrespective of their religion, caste, greed, and color. But this union government never follows these culture and dharmas, but loudly proclaim that they are the saviors of this land's culture and diversity. Honorable Sir, this is right time to reflect and introspect on the promise made by our forefathers collectively to the Maharaja for Hari Singh, the last ruler of Jammu and Kashmir. You made a big statue of our forefather Sardar Vallabhbhai Patel, and you have voluntarily forgotten the promise made by the Vallabhbhai Patel to Maharaja Hari Singh and people of the Kashmir. Sir, according to the culture and dharma of this country, following Sardar Vallabhbhai Patel's promise is more important than making a statue of him. My opposition to the bill stems from its fundamental flaws, each of which poses a significant threat to the future of Kashmir and its people. The most important egregious aspect of the bill is its blatant disregard for the principle of representation and cornerstone of any democratic system. By empowering the Lieutenant Governor to nominate members to the Legislative Assembly, the bill effectively strips the people of Jammu and Kashmir of their fundamental rights to choose their representatives. Never in the history of India, no state has been downgraded into a union territory, especially without the consent of people of their elected representatives. The proposed increase in assembly seats slowly to accommodate reservation for scheduled caste and scheduled tribes appears to be a positive steps on the surface. However, it fails to address the underlying structural inequalities and systematic discrimination faced by the communities. Sir, the bill's selective approach to addressing the issue of displacement by proposing the nomination of Kashmiri migrant raises serious concern about the exclusion of other communities who have suffered similar hardship. This singling out of one particular group further deepens existing division and create an environment of resentment and suspicion among different communities. True progress lies in acknowledging the suffering of all displaced communities and actively working toward providing them with justice and sense of belongings. The great Dravidian Salvat Aringer Anna once said, India is a vast, diverse country. The union government cannot effectively address the need of all its people. We need a federal structure that allows states to have a meaningful say in their own grievances. Sir, the abrogation of Article 370 is an attack on federalism. The 2019 Act and this amendment are unconstitutional since Article 3 does not give the Parliament powers to downgrade federal democratic states into a less representative form such a union territory. The Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 raises concern about its compatibility with the instrument of accession signed between Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir and the Indian government in 1947. The bill violates the spirit and the intent of instrument of accession in several ways. Honorable member. Honorable member. He is nullifying the Supreme Court judgment of this morning. I am about to close my speech. The honorable. When I am expressing my feeling, One second. When I am expressing One why second. he is intervening? Honorable member need to be alive to the fact that in a historic judgment today, Yes. the Honorable Supreme Court You Yes, are sir, correct. I got the judgment, sir, but sustained what what he the said is something Parliament has different from done. the judgment. And therefore, to speak against a it is my judgment privilege to say anything. which is law of the land is not appropriate. Your assertion was 100% to the contrary. Sir, this may be Since an explained, sir. objection has been raised by the Honorable Minister, and all of us must keep in mind when judiciary has taken a view on a particular issue comprehensively, decisively, we need to abide by it. Sir, I have not gone into the judgment. I have not gone into the judgment. Sir, it is
I have not gone into the judgment, but one it at is a my time, privilege one at a to time. tell my view that One any second. law denied, sir. Sit down. Take your seat. Take your seat. One at a time. Yes, Mr. Venugopal. 1 second. But yes, Mr. Venugopal. My point is, honorable member is speaking. Everybody has freedom to speak. Of course, Supreme Court has given a judgment. We have telling our point of views. His party has a different point of view. He is telling like that. But the member have a freedom to speak about that. Yeah. There's a every right to criticize the judgment Okay. also. Take your There is seat. an every right to criticize judgment also. Take your seat. Honorable members, Sir, I oh, have sir, indicated. sir, 1 second, on- take your seat. on a I have contempt of indicated. court, 1 please refer second. me, Krishna. I have indicated on several occasions your freedom of speech in this house is not unqualified. It does not give you license to say whatever you feel. You have to be highly This accountable. house is for that only, You have sir. to be accountable. You Without can't set your eyes to the law of the land. Without unparliamentary word, any How member can speak anyone anything. talk against a judgment We which should has not been use rendered? the unparliamentary word. Sorry, take your seat. Sir, Take this your is, seat. this is a, Nothing will go on record. This is improper. No, this is improper. The highest court of the land has given a judgment. sir, The this is honorable the member highest is place talking to about express it. the view. We can't Sir, ridicule a this is the judgment like highest this. place. Sir, this is the highest forum. Okay. Conclude, Sir, you this is- conclude. 1 second. Sir, this is the highest. Honorable members, take your seat. Take your seat. I can understand your agitation. I can understand. But we can't change the judgment is given by the Supreme Court. Go ahead. Sir, Yes, this is honorable, no, honorable member first. Sir, Please, this is the highest Please, forum. I'll give time. I'll give time. Please conclude. Uh, Honorable member. Honorable member, Sir, conclude. this is the highest forum to express the feel. 1 second. This is the place to express. Anyhow, sir. Sir, the father of Dravidian movement, Tandai Periyar once said, ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் Take your seat, தங்கள் Mr. Jairam Ramesh. Take your seat. Have I given you permission? I know what I have done. I am conscious of it. Please, take your seat. You are determined to create disorder in the house. Is that your style? Why are you creating disorder in the house? No, please, take your seat. Honorable member. Sir, the father of Dravidian movement, Tandai Periyar once said, ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் தங்கள் சொந்த விதியை தாங்களே நிர்ணயிக்கும் உரிமை உள்ளது. காஷ்மீரி மக்களுக்கும் அது பொருந்தும். Means every race has the right to self-determination. That appeals to the people of Kashmir as well. Moving beyond this bill, I propose the following concrete step to address the situation in Kashmir, sir. Can the House subscribe to this? Establish an Can independent you commission observe of silence on inquiry this? to investigate human rights violation in Kashmir. Can you Repeal, believe in constitution with such kind of observations? Repeal, These will be deleted. repeal. Your repeal observations are declaring law expunged. like Armed Forces Special Power Act that grant immunity to Honorable member, security forces. you are abusing the platform. Allow the, Abusing the platform. You are not aware what you are saying. You have gone too far. sorry, You have gone too far. I expunge your observations. You indicate of racial determination. no. That's what you said. Yet, it is there. Every race. Sorry, it's expunged. I repeat, Please conclude. please understand what I say. Every race has the right to self-determination. That How appeals- can it be there? It is there. It was said I'm by so Congress. sorry. You are in the wrong. No, sir. With the Why federal are you system, keeping silence on sir, such an issue? With the federalism, Take with the your seat. federalism, You have forfeited your right to hold the floor. Please, Sir, take your seat. it is No, your time is also over. no, sir. It is Digvijay, wrongly I'm understood saying by your the time chair, is sir. over. Sir, it is wrongly understood by the chair. It is wrongly understood by the chair, sir. Shri Sanjeev Arora. Shri Sanjeev Arora. Honorable Minister. Being brought into this house, and I appeal to you that that should not be No, it's entertained. expunged. It should be expunged. I And if take it very comes to it, strong I would exception like to this. ask the Congress party members who are in alliance with them, if they go along with that. No, How could no, that house be hearing this? How could Those this house be observations hearing are this? expunged. Congress should stand up and say, I am sure
Honorable, one second, please. Take your seat. All of you take your seat. Please take your seat. Take your seat. Honorable members. One second. Please, please, please. Mr. Arora, please. Honorable members. One second. Please. Observe silence, please. Honorable members. It was not a good spectacle. It is so serious. In this house, the House of Elders, the upper house, can we countenance someone talking of such kind of language? Determination on the basis of race? That goes against very essence of Constitution. We all have taken oath of the Constitution. How can we countenance? Sir, I expunge your observations. Yes, Mr. Tandon. The people of Jammu and By the Honorable Minister, and all of us must keep in mind, please. It cannot be countenanced by anyone who believes in the nation, who believes in our Constitution. I'm expunging those parts. Mr. Arora, please go ahead. Mr. Arora, do you want to take floor, Mr. Arora? Yes. And keep calm. Sir, keep calm. You are a senior member. You know. ये कैसा मालूम हुआ मैं वही बात कर रहा हूँ। Please go ahead. हाँ? बोलिए सर। सर आपने स्माइल तो क्या कम से कम? नहीं, स्माइल करता हूँ, कभी लेकिन कभी उतना नहीं आता जितना आप करते हैं। थैंक यू। सर, ये एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, स्टडी करके लाता है, अपने व्यूज को आपके सामने रखता है। अगर वो ठीक नहीं है, कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपके बिजनेस रूल्स के तहत, तो उसको आप निकाल दे सकते हैं। लेकिन आप टोटली अगर उधर के लोग उठे, गड़बड़ करे, तो आप वो कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं मानता। आप जरा जो आदमी इधर जो मेंबर इधर कहता है उसको कहने दो। और रिबट करने के लिए तो चाणक्य है ना, रिबट करने के लिए यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, वो हर चीज का रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं मुझे मालूम। और आप कितना भी कोशिश करो, कोई मिनिस्टर बनने वाले नहीं जब तक शाह और मोदी साहब बोलेंगे। डीएमके ने बात कही, माननीय सदस्य डीएमके इनके साथ अलायंस में है, दोनों की गठबंधन की सरकार है। वे घमंडिया गठबंधन के बारे में सब लोग जानते हैं। ये इतना स्पष्ट कर दे सर, ये इतना स्पष्ट कर दे कि वो कहते हैं कि सबका अधिकार है। तो जो माननीय सदस्य डीएमके ने कहा उससे वो सहमत है या नहीं है, हम इतना ही अनुरोध कर रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि वो सहमत है कि नहीं है। और रही बात घमंडिया गठबंधन की, उन्होंने माननीय गृह मंत्री को अमित शाह ने क्या कहा, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गृह मंत्री पे हमें गर्व है, लेकिन इन्होंने ही अभी ये शब्द Okay, leader of the house, please. Okay, 1 second. I'll give floor. 1 second. I'll give floor to the. 1 second. Take your seat. Nini, you don't allow me. Sorry, take your seat. No. Take your seat. Do you want me to name you? No, do you want me to name you? You can't take your seat. Do you want me to name you? Sorry, take your seat. I would, since it is a very important issue,
One second, one second, one second. Honorable members, honorable members, 1 second. Ma'am, you are forcing me. You are forcing me. Take your seat. Take your seat. Take. Honorable members, I don't want to raise my voice. I have a bad throat. So, take your seat. No. Take your seat first. Allow me to say something. This is your senior member. Sit down. Please sit down. Sit down. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. No, take your seat first. Take your seat. Take your seat, Mr. Gokhale. Mr. Gokhale, take your seat. Honorable members, what the honorable member had spoken is too serious. 1 second. 1 second. 1 second. 1 second. I expected. 1 second. I expected leader of the opposition to take a serious view of what the honorable member had spoken. It outraged the spirit and essence of the Constitution. It questions our integrity. It questions our existence. It can't be put under the carpet because right of freedom. I would expect the honorable leader of the opposition to make his point known on the issue. I had intervened because the honorable member had crossed all limits. Yes. Sir, self-determination. An issue of self-determination being talked about is no, sorry. Take your seat first. Take your seat. 1 second. No. Unless you take your seat, I will not allow anyone to hold the floor. Take your seat. Yes, Mr. Venugopal. In a cool manner, in a composed manner, taking note of the serious assertions of the honorable member. What I heard your serious observation on Abdullah's speech, honorable member's speech. But what my request to you, please go through the records. While speaking, he quoted Periyar, one of the most important reformists of the country. What Periyar told about with this different caste, different religion ke liye, Periyar told like that only. He quoted Periyar's speech only. But how you verify, sir? You verify, sir? Sit down. Take your seat. Take your seat. 1 second. Would you take your seat? Take your seat first. Take your seat. Don't become a shouting brigade. Take your seat. Honorable members, can we quote anything in this house? Can we quote to the extent of it being sedition, challenging our integrity, going against our constitution, going against the judgment of the Supreme Court this day? No, that will not be acceptable. Mr. Arora will take the floor. No, I will not allow it. Sorry. No. I thought you will contradict him, sir. I thought you will contradict him. No. Honorable Home Minister. मान्यवर माननीय सदस्य ने जो कहा रिकॉर्ड पर रखना नहीं रखना आप राज्यसभा के नियम और आपके विवेकाधिकार पर जाता है, परंतु मेरे मन में ये सारी बात सुनकर एक छोटा सा सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट से सहमत है क्या? तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब, ये रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मिस्टर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से, माननीय सदस्य अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है क्या? क्वेश्चन बड़ा शार्प है साहब, कांग्रेस पार्टी इनके स्टेटमेंट से सहमत है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए।
Leader of the opposition, take your seat, all of you. Let Sir. us have cool, calm, composed atmosphere. Take your seat. Leader of the opposition alone will speak. Leader of the opposition will speak. Others take it. देखिए साहब, Every time you keep on एक shouting मिनट, there, एक I'm मिनट। not good. You must देखिए, have some silence zone. उन्होंने जो कोट Some किया, silence zone. That उन्होंने will help you and the house. Yes, sir. Go ahead. सर, उन्होंने जो कोट किया, पेरियार के जो लिखी हुई बातें हैं और कही हुई बातें हैं, उन पर उन्होंने बात किया। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम भी सहमत हो सकते, कई बातों नहीं भी हो सकते, लेकिन आप जो उनके विचारों को उन्होंने लिखे हुए विचारों को उन्होंने यहाँ प्रस्ताव किया, वो उनकी बात नहीं है, उनकी बातें नहीं है, कोटेशन उन्होंने कोट किया, जो उनको कहना था वो किया। तो आप कितने ये बातें हैं जो उनको कही हुई है, उस विचारधारा यहाँ पर वो बोल रहे हैं, उससे हो सकता है वो भी सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बार बार उसको बात करने से रोकना, दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है उनको, इनको भी वैसा ही कर। किनको आदत है सर? हाँ, गवर्नमेंट को। नहीं सर, आपको कैसा बोलूं? यहाँ तो मुझे ही कंट्रोल करना है। मैं आपको आपसे बोलता ही नहीं, क्योंकि आप बात को तलवार उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी गर्दन छुपा के रखा। मैं प्रतिपक्ष के नेता को एक बात कहना चाहूंगा, कोट करना एक बात है, he was quoting it affirmatively, he was drawing oxygen from it, he was taking sustenance from it. I was fully alert. This can't be permitted in this house. No, this can't be done. Dr. Jitendra. I'll give one small point which contradicts what Honorable Venu Gopalji said, that he is quoting Pariyarji. We may agree or not agree. He is see the intent of quoting. Yes. He is quoting to endorse his point. Yes. It is not a simple quotation. No. It is not an academic quotation. It is not an academic citation. He is quoting to endorse his view. He is quoting to endorse his view. Yes, Digvijay Singh ji. But before that, Digvijay Singh ji, you are an experienced member. I'll put it to you. So what, sir? Do we quote to take wind out of our argument? We quote to support our argument. We quote to give strength to our argument. That can't be allowed. Go ahead. आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, न आप पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप रेफरी हैं, आप गोल मारने के लिए नहीं है कि इधर से मारें या इधर से मारें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, ये उसका अधिकार है और रहेगा। सुनिए, वन सेकंड सर। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा, क्या सहमत, हर बात में आपकी सहमति जरूरी है क्या? हमारी सहमति जरूरी है क्या? ये अगर सहमत पूरा सदन सहमत हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहां से रहेगा? इसलिए माननीय आपसे अनुरोध है, माननीय आप 2 मिनट सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए, उसका अधिकार है। 1 सेकंड, और कोट किया। मैं आपसे निवेदन करना, और सुनिए, आपका एक निष्पक्षता से बैठकर आपको यह अधिकार है, यदि कोई अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिलीट करिए, तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? एक सेकंड, दिग्विजय सिंह जी, it is much beyond being unparliamentary. It is much beyond expunction. ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था. That was the objection. I don't agree to that. Sorry. Yes. मैं पूरी तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह जी का आदर करता हूँ, माननीय एलओपी का आदर करता हूँ। बहुत आपने सही कहा कि अधिकार है, सभी का अधिकार है कि पेरियार जी के स्टेटमेंट से समर्थन दे या नहीं दे, एग्री। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही एक अनुरोध है
कि डीएमके के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अब्दुल्ला जी और माननीय एलओपी, आप जो भी आपके अधिकृत सांसद नेता है, इतना बता दें कि ठीक है, आप पेरियार जी ने जो कहा उसके असमर्थन में खड़े हैं, इतना ही बता दीजिए। हम तो नहीं कह रहे आप समर्थन करिए, आप स्पष्ट कर दीजिए आप समर्थन में हैं ओके मिस्टर अरोड़ा, नहीं है तो भी बता दीजिए। आप बोलिए कि ये उन्होंने मिस्टर कहा अरोड़ा, था। Mr. Arora, only what Mr. Arora will say will go on record. Mr. Arora, that's all. Take your seat. Mr. Arora. एक second. Take one second. स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते। पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में, थोड़ा रास्ता और नाप लेते। अरोड़ा जी आप बोलिए। सर, पर मेरी आपत्ति से ज्यादा है, आप तो समर्थन नहीं करते हैं, बट इन दिस हाउस सिटिंग ऑन दिस चेयर, having taken oath of the constitution like all of you, I cannot allow any assertion in support of a statement that is against integrity of the nation. Mr. Arora alone, others take your seat. Mr. Arora, your 6 minutes. Use your 6 minutes. right, sir. Thank you. Sir, I thank you, Honorable Chairman, Please, sir, take your seat. Mr. Arora, take your for seat. giving me. Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition wants to say something. उन्होंने पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय में। सर एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है, उसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, सबके तरफ से नहीं, फॉर्मली अथॉरिटेटिवली मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो वैसा ही हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? तो ये मक्तल है, वैसा है, हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल के ही आएंगे, लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल के तो नहीं हम कर सकते। सर मेरी हालत समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, आप ऐसा ही रहे तो। यस मिस्टर गोयल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट से वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए का Yes, नाम Sudhanshu, what do बदलने you want से to say? फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही One second. घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टिकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद पे रहेगा। यूपीए हो या Yes. You were saying something, Sudhanshu? सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन, go ahead. सर, 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। Mr. Arora now. Mr. Arora. Okay. Okay. Leader of the DMK legislature party, Kiruchi Shiva. I think hype is made on a very ordinary statement, sir. You mean that's we have to decide, not you. Yeah. Kiruchi, it has to be very brief intervention. Yes, sir. Very brief. When an ordinary matter has been made as a very big thing, that something has been derogatively remarked by and everyone has made in that issue, I have to make my remarks, sir. Sir, member was Before you do that, Kiruchi, before you do that, I gave enough opportunity to your member to reflect and withdraw. He continued. I thought leader of the opposition will calm him down. That did not happen. Say what you have to say, please. Sir, the member in his position as in the capacity of a member was speaking something. First, when he said that about the article abrogation of 370, sir, your intervention said that it is against the Supreme Court order, what has been decided today. Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, wait. One second. Let me speak, sir. Let me speak. नहीं शिवा साहब एक मिनट। शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। We were against the abrogation. Still now, that's happened. Again, he quoted Periyar, sir. What Periyar said was that every race has a right to determine their own rights. What is wrong in that? What is wrong in that, sir? Sir, no. They don't agree. Sir, let me complete. Sir, don't give a please, let us hear him in absolute patience. It's a very important issue. Yes. Please, very, very important issue. Yes. Sir, the entire nation is watching us. Yes, sir. Very important issue. We are very much aware of it. They are just trying to give a different color to us. Sir, DMK in 63, when the Chinese aggression came, we gave up our then slogan, separate Dravidan. Later, we were very firm that DMK is for the unity and integrity of this nation, and every state should have its rights, and federalism was supported by us, and we stood with the policy of state autonomy. So don't try to give DMK a different color. We are second to none, sir. During the Chinese aggression, we gave up our policy. And during the Bangladesh war, we gave the largest money. And every time, whenever India is in distress because of external aggression, we are. What is your stand on what he said? Sir, he quoted Periyar. Sir, what is it? Can this be quoted? Sir, you're right. To back up an argument? Sir, what is it, sir? Please, you have to enlighten me, sir. You have to enlighten me. No. What is wrong in quoting Periyar? Periyar has said nothing, sir, in favor only of a particular race of people. There is nothing wrong, and every race has a right to self-determine. So is the Indian alliance as a common? Well, let the people take note of it. Mr. Arora. Sir, Mr. Arora. One second. Mr. Arora now. Mr. Arora will hold the floor. Sir, I am concerned very seriously if determination takes place on such a plank and that argument is used to buttress your point,
Nothing can be more outrageous than this. Nothing can be more outrageous than this. Yes, Mr. Arora. Mr. Arora. Nothing will go on record now, Mr. Arora. Mr. Arora. Your 6 minutes start now. Start. Nothing else will go on record except what Mr. Arora says. Yes, Mr. Arora. No, only Mr. Arora. Mr. Arora. Sir, please. Mr. No, 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 no. No, no, I don't want a situation to further worsen. Let me tell you, everyone in the country is concerned. Everyone is concerned. No, 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 I have given enough indulgence. Okay. Okay. Hello. Sir. Sir, DMK need not be given any other color. I am again making it clear not to create any confusion. We want to achieve any rights of the states only within the framework of Indian Constitution and as a nation on the whole with integrity and sovereignty Mr. maintained. Arora now. But states should have their One rights. second. That's all, sir. Mr. Arora. Mr. Arora. You see, Mr. Tiruchi, there can be no doubt. It's a very pernicious thought. This thought is antithetical to constitutional values. This is against integrity of the nation. Such kind of determination is unacceptable. Mr. Arora. Yes, yes, you can understand. Yes, Mr. Arora. Go ahead. Mr. Arora, nothing will go on record now. No, no, please, please. Mr. Arora. I will. But before that, I'll protect the Constitution. I will protect rule of law. I will protect my motherland. And I will not give unqualified right to members to be loose cannons. No. Yes. Yes, Mr. Arora now. Sir, I thank you, Honorable 6 Chairman, minutes. sir, for giving me opportunity to speak on short and simple bill which has great relevance to Jammu and Kashmir and country as a whole. सर एक स्पीच चालू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता अब हूँ आपका समय है सर दायरे में बोलिए 4 बार उपयोग मैं खड़ा कीजिए। होके बैठ गया मैं 1 मिनट बताता हूँ मैं सर मेरी ग्रैंड डॉटर इज 7 years old तो whenever she goes to school same times I leave office तो वो कहते हैं आज आपका स्कूल है मैंने कहा हाँ पार्लियामेंट मेरा स्कूल है पर फर्क ये है कि आपका क्लास लगेगा मुझे नहीं पता मेरी क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी तो एक सर फर्क मैं और सोच रहा एक था ये सेकंड सेशन बहुत बढ़िया एक चल- सेकंड एक फर्क और है हाँ जी। आपकी पोती अध्यापक को सुनेगी आप अध्यापक को नहीं सुनेंगे सर मैं तो बोल रहा हूँ आपको अच्छा तो सर बहुत मजा आ रहा है इस बार के सारी पार्टीज कोई इस बिल को सपोर्ट कर रहा है कोई नहीं सपोर्ट कर रहा पर डिस्कशन हो रही है और बड़ी यूजफुल और अच्छी डिस्कशन हो रही है और हाउस बढ़िया चल रहा है इसकी सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूं अदर देन दिस लास्ट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन लास्ट 10 minutes sir this bill brings 2004 act and in line with rest of country सर मेरा इसमें दो चीजें सिर्फ मुझे बोलनी है एक तो हिंदू पंडित्स का इन्होंने रिजर्वेशन दी विच आई एम विद इट जब मैं स्पीच बोलने लगा तो बाबा जी कहते आप हमारे एमपी साहब कहते आप बोल रहे हो मैं क्या हाँ मैं बोल रहा हूँ कहते आपने ये जरूर रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे पंजाबी भाई जो सिख थे उन्होंने भी उतना जुल्म सहा जितना पंजाबी पंडित्स ने सहा तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए अगर उनको 2 दिया तो कहते आप रिक्वेस्ट जरूर कर लेना कि एक जरूर दे तो मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पंजाबी भाइयों का भी जो सिख भाई हैं उनका कुछ समझे जिन्होंने जुल्म सहा ड्यूरिंग जिस टाइम पे हिंदू पंडित्स ने भी सहा
और सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, इनके हाथ में है कि हमारे जो भाई जम्मू कश्मीर के हैं जो राज्यसभा में आ सकते हैं वो कब आए। जितनी जल्दी ये इलेक्शन करवाएंगे उतनी जल्दी वो आएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर लोकसभा के साथ ही इलेक्शन करा दें तो बहुत अच्छा लगेगा और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नॉर्मलिटी आएगी। और सर मुझे कुछ नहीं कहना इस बिल पे। इट इज शॉर्ट एंड स्वीट एंड थैंक यू वेरी मच। Dr. Sasmit Patra, 6 minutes. Thank you, Honorable Chairman, sir. On behalf of my party, the Biju Janata Dal, and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, I rise to support both the bills brought together by the government today. At the outset, I congratulate the Parliament, the government, the Honorable Home Minister for the historic judgment by the Honorable Supreme Court today on the abrogation of 370. It vindicates the stand of the Parliament, it vindicates the stand of the government, and it vindicates the stand of the Biju Janata Dal, because we forcefully supported the entire abrogation bill on 2019 August. Honorable Chairman, sir, I also welcome the decision of the government to bring these two bills because it indicates the strong intent of the government to ensure that whatever is required in order to prepare J&K for democratic elections is being readied. And with that, we will very soon, probably next year, have a full-fledged Vidhan Sabha in the Jammu and Kashmir. I think the road is being set by this kind of a legislation coming in. It is also good that we have a very proactive Nyaik Delimitation Commission. Why do I say Nyaik? Because it is headed by a former Justice of the Supreme Court, which ensures that whatever recommendations of the commission comes is beyond suspicion or doubt. I come to the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, Honorable Chairman. The government has tried to build an inclusive and progressive outlook for Jammu and Kashmir Vidhan Sabha through this bill. The total seats are 114. 7 are being reserved for the scheduled tribes. It is a way forward for tribals empowerment. My leader, Shri Naveen Patnaik ji, believes in tribal empowerment and we strongly support it. 1 seat is reserved for the displaced people from POK-occupied Jammu and Kashmir. Who are these people, Honorable Chairman? In 1947, when there was Pakistani aggression, at that time, 31,779 families were displaced. Out of that, 26,319 families stayed back in J&K. 5,460 families moved on. Apart from that, in 1965 Indo-Pak War, 3,500 families were displaced. In 1971 Indo-Pak War, 6,565 families were displaced. Altogether, 10,065 families. If you add the previous 1947, it comes to 44 families that have been displaced. And providing them a seat is a voice for them in the coming Vidhan Sabha. It's a very good step. Kashmiri migrants. Genocide, what Vivek Tankhaji said, I strongly support his view. There was a genocide in 89-90 in Kashmir, where our Kashmiri brothers and sisters had to forcibly leave their land in the middle of the night and run away for fear of life. We are providing them a voice today. I think there's a very good step. In this, we are adding one more, that a woman's representative will be there among these two. It's a very good women's empowerment move. Let's come to the data. The relief organization of Jammu and Kashmir says 46,517 families are recorded to have moved, which comes to 1,58,976 people were displaced because of this. Don't they deserve a voice, Honorable Chairman? They deserve a voice. This bill gives them that voice, and therefore my party, the BJD, and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, we support it. Honorable Chairman, today they would be watching the television. कि चलो आज तो आवाज मिल रही है. उस दिन रात के अंधेरे में जान बचा के भागना पड़ा था. अब विधानसभा में बैठेंगे, हमारा भविष्य निर्णय करेंगे. ये सोच, ये विश्वास उनके साथ रहे. People residing in the Union Territory of J&K. This is not part of the bill. This was done earlier, but I'd like to reflect on this. 24 seats have been reserved for such people
who are today not within the jurisdiction of the Indian territory. They were a part of us. They will always stay a part of us. And one day we will have the POK. They'll be part of the Vidhan Sabha. They will be with us. I will sum up the bill. My time is running out. Tribal empowerment through this bill, excellent. Kashmiri migrants get voice, excellent. Women's empowerment, excellent. Displaced people from POK getting a voice, excellent. Now I'll come to the second bill very quickly, 1 minute. Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Honorable Chairman, the second bill changes the nomenclature of weak and underprivileged classes to other backward classes. This has been brought on the recommendations of whom? Not the government only. It has been brought on the recommendations of the Jammu and Kashmir Social and Educationally Backward Classes Commission. A commission has gone into it and said, we must have it. So by the commission's recommendation, it has come. This is to do away with any confusion in giving out certificates. Any doubts, any confusions would be moved away. And ये सिर्फ नाम के वास्ते नहीं है. This is not the change of name. नाम के साथ सम्मान भी जुड़ रहा है और ये सम्मान की बात है और सिर्फ नाम के वास्ते नहीं सोचना चाहिए, सम्मान के साथ जोड़ के सोचना चाहिए. I'll summarize 30 seconds more. Both the bills stand to empower the people of Jammu and Kashmir. By this bill, we reiterate our stand that the entire country, 1.4 billion people, stand with the people of Jammu and Kashmir. We stood with them, we stand with them, we will stand with them. This is a way towards new Kashmir. This is a way towards Naveen Kashmir. This is a way towards a prosperous, peaceful, and strong Kashmir. With these words, on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik ji, and my Biju Janata Dal Party, we support the bills. Thank you. Sri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. 6 minutes. Yes, sir. Sir, these two bills that have been presented by the Honorable Home Minister are supported by YSR Congress Party, by our party president, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, and we will support the bill and we are going to vote in favor of the bill. Sir, this is a right step towards undoing the wrongs done to the Kashmiri Pandits by the successive governments in the state and also by the successive central governments during the Congress regime, sir. Sir, it all started, I would like to say that it all started during the regime of the Persian king, that is Sultan Sikandar, during 1389 to 1413, when the first mass exodus of Kashmiri migrants took place, sir. It is the Persian kings, which the Congress party has supported subsequently, sir. Sir, 1 lakh migrants were drowned in the Dal Lake. Women were raped. Kashmiri Pandit women were raped. And sir, and they have been sold also. Sir, Hindus were given the choice of 3 choices. Either Hindus had to convert or flee Kashmir or perish. This is three options that have been given to Kashmiri Pandits, sir. The temples, the sacred temples have been destroyed, demolished, and they were not even allowed to wear sacred thread, that is Janevu, and also tilak. They were not allowed to even to put the tilak also, sir. Because of the tyranny, only 11 Kashmiri migrant families survived during the regime of that Persian king, sir. Sir, since then, 6 exodus of Kashmiri migrants have taken place, each more heinous than previous one, sir. Their properties were taken over under the grab of land to tiller policy and through the use of unconstitutional, unfair, and unequal laws, sir. Terrorism has reigned through supreme in Jammu and Kashmir through political violence subsequently, which was aimed at separating Jammu and Kashmir from India and securing its annexation to Pakistan, sir. Sir, now I'll have to explain. I will not be discharging my responsibilities properly unless and until I highlight the issues that highlight the blunders that have been committed by the Congress government, sir. Sir, it is the delusions of Nehruvian pseudo-secularism that prevented Kashmir issue from getting resolved, sir. Sir,
Yes, yes. We must now ponder the real hard questions that haunt us, the civilization of the state, sir. Sir, in 50 years rule, the Congress party has had many opportunities to undo the injustice done to the people of Jammu and Kashmir, but they failed to do so. Sir, first blunder in July 1947, Maharaja Hari Singh proposed merger of Kashmir with India, but Nehru hesitated. And Nehru hesitated. Don't disturb me. You have committed a blunder. And this indecisiveness of the Nehru, given elbow room to the riders of Pakistan to mobilize the land, launch the attack on Kashmir, sir. Even though Indian army occupied Srinagar and driving away the Pakistani army and from other parts of the Kashmir, but Nehru stopped it. Why? Why did Nehru stop it? Sir, I'm asking the question to the Congress party. Why? Whom, sir, whom they wanted to uprise and protect? Sir, the second blunder what Nehru has committed, the second blunder was referring to Nehru has referred the Kashmir issue to UN, United Nations, which is a second blunder, sir. And the most dangerous decision what Nehru has taken is referring the matter to UN, sir. And the third blunder what Nehru has committed, adding 370. Nasir Hussain, Honorable MP, very keen to speak on this subject to have a point of view. I would urge the chair, even if some extra time needs to be given, we may allow him to rebut whatever Vijay Sai is saying. We may give him some time to rebut whatever he says. Piyush ji, it is left to me. This is a good debate. I do want members to utilize their time. I have a mind to give opportunity to all. It is with the sense of the House that I may extend time also. But whom I have to give time may be left to me. Nasir Hussain is more prominently visible to me. Yes, continue. You are making a good point. He wants to rebut, but no one will interrupt. Sir, Without the third interruption, blunder. Honorable member, one second. Nasir, take your time. No, 1 second. 1 second. 1 second. 1 second. 1 second, gentlemen. 1 second. 1 second. 1 second. Vijay Sai Reddy ji, 1 second. Honorable members, when an assertion of fact was made and Dr. Jitendra Singh raised an issue, I said authenticate. Authentication is important. You have made important points and you should be happy and delighted to authenticate them. So no issue on that. And I can do, one second. And I can order authentication on my own. I also get input from the honorable members. If some member takes an exception, we do it. Dr. Jitendra has done a good thing. When a member was giving facts after facts, he said, I don't believe in the facts. The facts have to be authenticated. So go ahead. Once he concludes, then I'll hear you. You will have to precisely indicate what authentication you want. Go ahead. Third mistake, third blunder what Nehru ji has committed is Article 370, adding Article 370 to the Constitution in October 1949, sir, which dashed all efforts to integrate Kashmir with India. Sir, the result, what is the result? What is the result? What is the result? The people of this country are paying price for the misrule and the blunders committed by the Congress party for more than 7 decades. Why? What Congress will say in this regard? If you have any answer, you can answer the questions. Sir, the next blunder, fourth blunder, the fourth blunder what the Congress party has committed, we had second war against Pakistan in 1965.
And this had given a second opportunity for Congress party to take back the Kashmir. And when India has gone up to Lahore, Indian forces have gone up to Lahore, why Congress party did not take back the Kashmir? Let them answer the question. Sir, the next fifth blunder what Congress party has committed, let me highlight it, sir. After 1971 war with Bangladesh liberation, we had another opportunity which Congress party has missed out to negotiate and return of Kashmir. Pakistan was ready to sign Shimla agreement on the dotted lines, but they had not managed it properly. What did Congress party do? When we had Kashmir in our hands, Congress gave the Pakistan on the Congress gave Kashmir on the platter to Pakistan. Shame. I have to say shame, sir. Who is responsible for this? It is the Congress party, Indian National Congress Party, which is solely responsible for the pathetic state of affairs in Kashmir, sir. Sir, the indifference and inaction and inability of the Congress party insofar as Jammu and Kashmir is concerned could never move forward from the tragic history, sir. It will remain in the history and Congress is to be blamed for this, sir. And sir, there are some two positive developments. And sir, you have in fact continue. Sir, I have no hesitation in saying that the central government, Honorable Home Minister, has taken the right steps in undoing the wrongs of the previous Congress government, sir. Modi ji came to power and we have moved the Congress party, we have moved from the Congress policy, do Vidhan, do Pradhan, or do Nishan, to new policy of Ek Vidhan, Ek Pradhan, or Ek Nishan. I appreciate, sir. And kudos to Honorable Home Minister and Modi ji. Sir, the abrogation of Article 370. Please keep quiet. You speak when your turn comes. The abrogation of Article 370, which is a blunder committed by the Congress party when it was added in the Constitution. Sir, 370 has already begun to show positive results. The abrogation has started showing positive results. Jammu and Kashmir has undergone tremendous transformation in last 9 years, sir. Sir, improved law and order, thanks to Home Minister. Decentralization of power, thanks to Home Minister. New infrastructure projects, thanks to Modi government. Sir, revival of economy, thanks to Modi ji government. Sir, agriculture, focus on tourism, investment, agriculture, and renewable energy, sir. Sir, last, sir, one suggestion I would like to make to the Honorable Home Minister, sir. Sir, nomination of POK seats, sir. Very important, sir. Please, Chairman, sir. Chairman, sir. Chairman. Go ahead. Sir. Please, sir. Last one suggestion, sir. Sir, currently, we have 24 seats in POK region which are not going for elections. We are not able to conduct the elections for 24 seats. But there have been no elections to these seats. To rectify the blunder committed by Nehruji, I suggest the government and Honorable Home Minister should make nominations to these 24 seats. Also, those who have migrated from POK to Kashmir, sir. It is not 2 nominated members. It is 24 nominated members who should be present in the Jammu and Kashmir Assembly, sir. These 24 from POK. Thank you, Kashmir, sir. Last one, sir. Sir, ensure stricter implementation of JK migrant immovable property, preservation, protection, and restraint on distress sales, sir. 1997. The Act provides for preservation, protection, and restraint on distress sales of the immovable property of the migrants. So I request the Honorable Home Minister to implement the Act in its letter and... Sir, increasing the cash relief. Sir, right now, the cash relief that is given to the migrants is about 13,000 rupees, sir. I request the Honorable Home Minister to increase it to 20,000 rupees per month so that they can feed themselves, sir. Thank you very much, sir.
we support this bill. Thank you, sir. Nasir, you had raised the issue. Sir. When the honorable member had indicated certain aspects. Yeah, thank you, Chairman, sir. You were aggrieved. Yeah, thank you, Chairman, sir. I think one thing. So you kindly confine to which part of his address you seek authentication. Please go ahead. Thank you, Chairman, sir. I think, Honorable Member, when you were speaking, you was trying to make an assertion that it was whatever happened in Kashmir was all because of Mr. Nehru. I think he has not read Nehru. He has not. No, please let me. You are finished. You are finished. You are finished. No. Sir, you are finished. You are finished. 1 second. We'll give the honorable member good atmosphere to contribute. And I request all of you to do the same. Yeah. Go ahead. Sir, I think the honorable member has not read Nehru, he has not read Patel, he has not read the cabinet decision, he has not read what Mr. Patel had written to Nehru, he has not read why the decision was taken, he has not read why the army had to be stopped at a particular point. He has not, just once again, sir, let me finish. He has not read, he has not read what Mr. Hari Singh wanted at that point of time and why it was an historical decision to stop at that point. I would like to assert here that it was only because of Nehru we are having Jammu and Kashmir in our country. Only because of Nehru. If Nehru was not there, if the cabinet had not taken the decision, Pakistan army would have captured the entire Jammu and Kashmir. So you don't want authentication? Pakistan army would have captured the entire Jammu and Kashmir. Okay. It was because of the decision of the Nehru's cabinet that the present Jammu and Kashmir is in India. So that they should understand. Okay. And for all the blunders, nothing will go on record. No, nothing will go on record now. Nothing will go on record, Nasir, now. Okay. Nasir doesn't want any authentication. Write it on a piece of paper. Give it to me. Write on a piece. One second. No. The honorable member. One second. The honorable member, in his wisdom, had serially indicated court within court blunders. So you give me, you write on a piece of paper what you want to be authenticated. Okay, I can understand you are not proceeding it. Shri K.R. Suresh Reddy, 4 minutes. But you are not telling me what does he... The honorable member has... One second. Pandit Nehru was our first prime minister. No doubt about it. The honorable member had enlisted serially, according to him, not according to me. I am not party to the debate. Several blunders that resulted in a messy situation in Jammu and Kashmir. You want what to be authenticated? Which blunder? Are you leaving some blunder or you want all the blunders to be authenticated? No. He is asserting, Digvijay Singh ji, he is maintaining his stand that there were blunders. Okay. Both sides. One second. If the honorable member or anyone wants that some authentication should take place with respect to the assertion, I quote within court, blunders as indicated by him, the honorable member may, during course of the day, send a communication to me to that effect, precisely indicating what authentication is sought. Shri K.R. Suresh Reddy. Thank you, Chairman, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak on both the amendment bills on Jammu Kashmir. Chairman, sir, there's a very good comparison between my region, that is Telangana state, and Kashmir. Both the regions have faced a lot of extremism, a lot of
terrorism, we had faced drought, migration, and so on and so forth. So my heart continues to beat for Kashmir because when Telangana was craved out, all what was promised, all what was missing has been delivered in the last 9.5 years. So today when we hand over the government to the Congress party, we feel satisfied that a region which was totally undeveloped, which was facing the worst migrations, has turned out to be the country's #1 state, and I wish them luck. And coming to Kashmir, sir, I do hope that the very idea of making the state into a UT, and when the UT is changed into a state, when the union government hands over to the local government, they have a similar situation to govern like how the government in Telangana has. So I will not like to dwell into the past of who did what, but going with our experience in Telangana, I would like to make a couple of suggestions to the Honorable Minister, which could be beneficial to the people of Kashmir, sir. The fundamentals required for any state to progress is education, sir. And in education, primary education is the best investment we can make in this regard, sir. So when I was looking at the figures of Kashmir, the primary school dropouts, when we compare it to the national average, which is at 1.9, Kashmir's average is at 4%. So the fundamentals are getting wrong. So this is an area where the Honorable Minister needs to look into it, come out with it. Midday scheme might be working in the country. In Telangana, we started even the breakfast scheme to attract the students, especially the young students. Similar things have to be worked out in Kashmir. You cannot allow a primary school-going student to sit in his house. That will culminate into various other factors which has led to the situation, sir. And then as the student progresses from a primary to the higher secondary level, unfortunately, Kashmir again has got in 2021, sir, 21-22 figures say the secondary school dropout is very high in Kashmir. We have this PMSS program, the Prime Minister Special Scholarship Scheme, which is happening in Kashmir also. But you have limited that only to 5,000 students. This gives a facility, a student in Kashmir, if he passes out in the 12th class, he can go study anywhere in the country. He can study in Hyderabad, he can study in Ahmedabad, he can study in Bangalore. Once he leaves the state and goes to a new state, there's a different perception he develops. Different ideas comes in when he goes back. So that quota, you have blocked it at only 5,000. I request the Honorable Home Minister, try to increase the quota. As many number of Kashmiri students who want to go out and study, please give them an opportunity. And as we graduate out of secondary school and once we get into the university level, unfortunately, there is no provision for any of the students to go to any overseas universities. There is no grant from the state government which facilitates that opportunity. There's only scholarship given by some UK-based, Israel-based, where the Kashmiri students get eligible. But there's nothing tangible coming from the government. If that opportunity is given to the Kashmiri students, definitely we'll get to see them more in the Harvards and the MITs, where our Kashmiri students will tend to bring in a lot of laurels to us, sir. So, and on the other front, a lot has been spoken on the tourism part. Well, the gates have opened up for Kashmir. It's a fact. Just another 2 minutes with your kind, sir, where a lot of tourists are going. But what is glaring there is the lack of infrastructure, the falling infrastructure. And the reason for that, fundamentally, the hotels, I'm not talking about the five-star hotels, the mid-level hotels where most of the tourists tend to stay, they are all on leased properties. The hotel is not able to refurbish them. They're not able to maintain them because since 1985, the leases of these properties have not been renewed by in Kashmir. A small effort has been done by Mufti Saab when he was the chief minister, but unfortunately he passed away and the matter is still pending. So I would really appreciate the government. Look at the Rajasthan model. That is really working. Look into it. And finally, sir, finally on the POK. On the POK, well, we are speaking about 24 seats being reserved, but the danger is
If you look back in 2007, POK made an appeal to the CPA, the Commonwealth Parliamentary Association, stating that they have become a region, they have an assembly, so they are entitled for membership in CPA. At that point of time, Government of India, through the Parliament, the then Speaker Somnath Chatterjee, we led a delegation and thwarted the efforts. So it's not the question of being happy by nominating 24 members here. What are the efforts the government is doing to ensure that POK becomes part of our country legitimately? So what are the directions through CPA, through CHOGM, through UN, the government is doing? With these words, sir, I thank you for the opportunity. Professor मनोज कुमार झा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यकाल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ये नहीं कह सकता कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं या मैं इसका विरोध कर रहा हूं। कई सारी चीजें हैं इसमें जो वेलकम इनिशिएटिव है, मैं मानता हूं। बस कुछ सुझाव दूंगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे बीच का संवाद, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं सॉरी, ये नॉमिनेटेड मेंबर है। अन्य सदस्य अपने एक सेकंड उन्होंने बड़ा ग्रॉस ट्रीटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, सदन की व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी। वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है। सर मैं समझ गया। सर, या तो मुझे बात कहने दी जाए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुन के आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। देश तो सबका है सर, तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत अच्छी चीजें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध के लिए विरोध करूं ये उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि जब हम ये कहते हैं कि ये नॉमिनेशन होंगे, पहले तो मैं तारीफ करूं कि अंडर प्रिविलेज के बदले एक शब्द जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपने उसका इस्तेमाल किया, तारीफ के काबिल। ये जो नॉमिनेट करने का अधिकार एलजी साहब को है आज की डेट में, कल राज्य बन जाएगा तो गवर्नर साहब होंगे, क्या ये स्टेट असेंबली को डेलीगेट नहीं होना चाहिए? और अगर करना चाहें तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि होनी चाहिए थी। तारतम्य थोड़ा टूटा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूं। आरक्षण को लेकर के भी हम पीस मील में करते हैं। हर सत्र में मैं देखता हूं कुछ बिल आते हैं। एक समेकित योजना पूरे देश के संदर्भ में हमें इसके लिए बनाने की आवश्यकता है, वो बहुत बेहतर होगा। आज 370 पे फैसला आया और सदन की जिम्मेदारी आज बढ़ गई है। उस फैसले के बाद से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं मानता हूं इतिहास, आपने यहां एक फैसला लिया था, तब संसद वहां थी सर, ये लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उस साइकोलॉजिकल हीलिंग की भी कोशिश होनी चाहिए, और ये हीलिंग हो सकती है सर। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, इसको बस तालाब ना बनाया जाए, महासागर अपने अंदर सब समाहित कर लेगा। माननीय सभापति महोदय, जो कश्मीरी घाटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनको लेकर के भी एक चिंता होनी चाहिए। बाहर हैं, उनकी चिंताएं वाकिफ है, बल्कि विवेक जी ने ये बात कहा कि बुरे से बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी उन्हीं घरों में, गांव में, गलियों में रही, उनका एक्नॉलेजमेंट मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, अंबेडकर साहब कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माननीय प्रधानमंत्री जी भी
कई बार उसको दोहराते हैं। सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नजरिए से देखेंगे ना तो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। मैं जानता हूं कि दिल्ली की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिटी और घाटी या जम्मू या लद्दाख की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिटी में फर्क है सर। अभी पिछले दिनों हमारे कई बीजेपी के साथी कह रहे थे कि चुनाव परिणाम संतुष्टि का परिचायक है। फिर तो लद्दाख में भी एक चुनाव हुआ था सर। सर बस 1 मिनट लूंगा चूंकि आपने पहले कहा था। सर एक आखिरी चीज कहूंगा कि पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षक सरकार की आलोचना करें, उसको देश की आलोचना ना माना जाए। ये फर्क मिटता सा जा रहा है, ये कश्मीर के संदर्भ में नहीं, बाहर भी। दूसरी चीज सर, दूसरे राज्यों में जो कश्मीर के छात्र रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन दीजिए। और आखिरी चीज कहूंगा सर, बड़ी पीड़ा के साथ, कि खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है। शांति के लिए न्याय चाहिए, वो उतना ही कश्मीर के लिए दुरुस्त है जितना मणिपुर के लिए। जय हिंद सर। श्री ए रहीम, 3 minutes. Sir, first they came for the communists. I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Sir, then they came for me, and there was no one left to speak out for me. Sir, these are the lines of Martin Niemöller, the writer who lived during the Black Age of Germany under the Adolf Hitler. Sir, if it is Kashmir today, it will be my state tomorrow. Sir, if I don't speak today, there will be no one to speak for me tomorrow, sir. Sir, I completely oppose the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. Sir, in the statement of objective and reasons for this bill, the Honorable Minister has said that Kashmiri immigrants and women will be represented in the Assembly. Sir, even after 4 years, no election has been held for the State Assembly, which was dissolved when Article 370 was repealed in 2019. Sir, what the Union government is doing with this bill is writing horoscopes for the unborn child. Sir, what heroic argument did Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister preach while repealing Article 370, sir? Terrorism will be eradicated. Peace will be restored in Kashmir. National security will be ensured. And the list goes on, sir. Sir, but what is going on, sir? Sir, Jawans are dying there every month. Does a week go by without reading the news of a terrorist attack in Kashmir, sir? Sir, another claim of the Union government was to ensure national security. Sir, I am not quoting here the words of the former governor of Jammu and Kashmir, which country was shocked to hear. Sir, what the qualification does the BJP government have to talk about the national security? Sir, our parliament, the sanctum of the Indian democracy, has been attacked only once in the history. Who ruled at that time, sir? Yes. BJP was in power at that time. Sir, in January 2016, our air base in Pathankot attacked for the first time. Who was in power at that time, sir? None other than BJP. Sir, when the shocking terrorist attack in Uri took place in September 2016, who was the Prime Minister at that time, sir? None other than Sri Narendra Modi ji. Sir, the country is facing a serious security threat under the BJP rules, sir. Sir, according to this bill, the lieutenant government can nominate certain number of members to the assembly, sir, which means a nominee will nominate members. Sir, please, sir. Sir, giving too much power to such nominee can have far-reaching consequences, sir. The fear that if another election is held, the people will not choose BJP. Sir, sir, just a minute. Just wait a minute. Conclude, 30 seconds. Yes, sir, sir. 30 seconds. Yes, Conclude. sir. Yes, sir. I will conclude, sir. Sir, no, sir.
The people will not choose BJP as their representative, if forcing the union government to nominate people with left-hand government, sir. Sir, why the central government, why the union government is running away from the election? Even the Supreme Court in today's verdict has asked for immediate election. Sir, is the government ready to say before the House that Thank you. on the basis of said verdict, Assembly election will be ensured Kashmir, sir. Sri Sir, Anil Prasad Hegde. Sir, just a minute, sir. I've given you 1.5 minutes more. Sir, just a minute, sir. Just a minute. Round up. Sir. I do believe that no kind of peace establishment is possible without restoring the democratic rights of the people of Kashmir. Mr. The Hegde. upper house of the parliament has a Nothing will go on record now. responsibility Mr. Hegde. Yes, Mr. Hegde. Mr. Hegde. Thank you, Chairman, for giving me the time. माननीय गृह three मंत्री minutes. जी लोकसभा में बता रहे थे कि J&K रिजर्वेशन बिल में कमजोर और वंचित वर्ग के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग किया जा रहा है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का बिल बताए हैं। Sir, my party led by Mr. Nitish Kumar and Raju Ranjan Lalan Singh ji and founded by socialists like late George Fernandez is a democratic socialist party, sir, fighting for the removal of man-made inequalities against violation of human rights, whether in Kashmir or elsewhere in the world, championing the cause of social justice and democracy in Kashmir and all over the world, whether in extending solidarity with His Holiness the Dalai Lama, Aung San Suu Kyi of Myanmar, Abdullah Öcalan, leader of the Kurdish people, who is incarcerated in Turkish prison for the last 24 years. I humbly request our External Affairs Minister is here and Home Minister is here. Through you, I request the government to immediately intervene and with Mr. Erdogan and get Abdullah Öcalan released, sir. Sir, on this J&K bill, driving home the point about commitment to social justice, Honorable Home Minister Saab, had mentioned about Kaka Kalelkar Commission. Sir, conveniently forgetting that it was his party-led government which was supporting the then his party-led party. His party was supporting that VP Singh-led government from outside, and which was responsible for toppling that government, sir. On the issue of giving reservation to OBCs, VP Singh government was toppled by your party, sir. भारत में सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट के मतलब अमीर गरीब के बीच, जाति जाति के बीच, पुरुष महिलाओं के बीच गैर बराबरी मिटाना है, सर। 2001 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार 2005 नवंबर में बने थे। मुख्यमंत्री बनने का सिर्फ 6 महीने के अंदर बिहार में स्थानीय निकायों में, पंचायत राज में उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर बिहार देश में पहले राज्य बना जहां महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। गुजरात में 8 साल बाद 2014 में महिलाओं को आरक्षण मिला है, सर। सर, यह दर्शाता है सामाजिक न्याय के बारे में किसको कितना कमिटमेंट है। अधिकांश घरेलू हिंसा शराब से होता है, सर। महिलाओं को राहत देने के लिए गांधी जी के अति प्रिय और अति कठिन मुद्दा को मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 साल से लागू रखे हैं। कश्मीर में किस जाति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है इसका पता नहीं है। अगर सरकार का मंशा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्याय देने की बात है तो और डेमोक्रेसी के लिए कमिटमेंट है तो सरकार बिहार में नीतीश कुमार कनक मेदला रविंद्र कुमार, श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार, not present. Oh, sir, you are really present, sir. yes, Honorable Chairman. You are sir. present with presence of mind. I am very thankful you, sir, for giving this opportunity to speak on Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Sir, the bill seeks to reserve the seats for Kashmir migrants, people displaced from Pakistan occupied Kashmir and scheduled tribes.
Sir, the reservation of seats for Kashmir migrants who were displaced from their own homes in the 1990s will ensure that the voice of the community is here loud and clear in the Jammu and Kashmir Assembly. The bill intends to increase the seats of the Jammu and Kashmir Assembly from 107 to 114. This also introduced a new section 15A and vests power with the Lieutenant Governor to nominate and not more than 2 members, one of whom will be a woman, from the community to Kashmir migrant to the Jammu and Kashmir Assembly. Sir, as far as the first bill is concerned, Jammu and Kashmir Reservation Bill, it is absolutely a harmless bill. The socially and educationally backward classes definitely have to be substituted from weak and underprivileged classes. That should be passed. By virtue of the section 15B, the LG of the Union Territory of Jammu and Kashmir may nominate one member from displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. Sir, you have to get ready for an election process, that the delimitation process had already been completed, that the elections will be conducted at the earliest and the populistic government would be put in place. Major steps have already been taken to bring the normalcies to hold the elections also. Today, the Honorable Supreme Court verdict, and his verdict, the Honorable Chief Justice says that the Article 370 was a temporary provision. The Article 370 was meant for constitutional integration of Jammu and Kashmir within the Union and was not for disintegration, and the President can declare that Article 70 ceases to exist, that the Honorable CJI says. And the Honorable CJI further stated, interrogation of Jammu and Kashmir into India and application of the Constitution of India, is it an entity to Jammu and Kashmir, is also upheld by the Supreme Court. The Jammu and Kashmir state elections have to be done by September 2024. The Honorable Supreme Court has also directed the government to conduct these elections to Jammu and Kashmir. The Honorable CJI further says, we hold exercise of presidential power to issue constitutional power to issue order. Honorable Abrogating member, your Article 3 minutes are 370 of over. Constitution as valid. Your 3 minutes are over. Please continue. In view of the judgment of the Honorable Supreme Court, and also the amendments sought to be these two bills will restore the normalcy. I request the central government to take immediate steps to hold the elections in the Jammu and Kashmir. I wholeheartedly support this bill. I conclude it. Thank you, sir. Thank you. Honorable member Shri Ghulam Ali. You have 6 minutes. Respectable Deputy Chairman, sir. आज जो बिल है ये 2002 रिजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, और जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और इसमें ये जो लोकसभा में पास हुआ है और इसका जो जम्मू कश्मीर में लाभ होगा वो 3 जंगों में जो लोग पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड हमारा नाजायज कब्जे में इलाका है उससे जो माइग्रेंट हुए हैं उनको लाभ होगा और इलेक्शन की रिगिंग के बाद कश्मीर में जब टर्माइल आया तो उसमें से जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित जो उस वक्त अपनी इज्जत लेकर अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, इज्जत, आबरू, नेटिविटी सब छोड़ के जम्मू में या देश के अन्य अन्य जगह में बसे, और इसके अलावा अदर सोशल कास्ट, क्योंकि जिसका बिल्कुल थोड़ा सा 2% के करीब उसको पहले रिजर्वेशन थी और उसको एक इज्जत दी गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस
जो कि पूरे देश में है। मैं आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो बेसिक बुनियादी जो नसूर था 370 उसको उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डबल मोहर लगाई है, इसके लिए मैं देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला और लाखों वो लोग जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को या देश के अन्य हिस्से जो हैं, जो उस वक्त देश के साथ नहीं जुड़ पाए, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जेलें देखी हैं, जानें दी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा आज के दिन। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और कांग्रेस के द्वारा बनाई गई और उनका कुछ मकसद था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जम्मू कश्मीर में कि जिसमें पावर जो है चेयरमैन सर कि कुछ फैमिलीज के पास रहे और इंटेंशनली जानबूझ के यूनिलेटरल सीज फायर करा और जिससे पीओजे के और हजारों की तादाद में लोग अपने घर बार फैमिली जमीन जायदाद अपनी मजहबी इबादत गाहें छोड़ के घर में जुगी यहां जम्मू में आके या देश के अन्य अन्य हिस्सों में जुगी झोंपड़ियों में बसे। और मैं इसके साथ सीओ के अगर उस वक्त के ये गलतियां नहीं होती तो करगिल की जो इतनी शहादतें हुई हैं, जो करगिल युद्ध हो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे तौर पर मोटे तौर पर कांग्रेस ने वहां हुकूमत करी है जहां अपनी आप कांग्रेस में से आप उसको बड़ा बेटा कह लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जहां बाकी लोगों ने ज्यादातर हुकूमत करी है। और 370 जो कि एक नसूर था, लेकिन उससे वो चीजें देश की ले जाते थे जिससे कुछ फैमिलीज को फायदा होता था। और कभी भी उनको किसी ने नहीं रोका था कि हमारी बहनें अगर जम्मू कश्मीर की हद से बाहर शादी कर लेती थी तो उनको जमीन पे जायदाद पे हक नहीं था, हक उनका कट जाता था। हालांकि उनको शरीयत इजाजत देती है, शरीयत भी इजाजत देती है मालिकाना हकूक पे। लेकिन चेयरमैन सर, बदकिस्मती ये है कि जो भी वहां सत्ता में रहे, जो भी उनको सूट करा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ट्रांजिशन के लिए वो उन्होंने कानून बनाए। यहां अगर आप रिगिंग की बात करें, अगर रिगिंग नहीं होती, अगर 1900 ये जो 87 इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो आज कश्मीर जो है उसमें अमन होता। उस रिगिंग की वजह से वो कश्मीर की विरासत, वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी मुसलमान भाई को पढ़ाने वाला, वो उसको अरबी पढ़ाने वाला, वो उसको फारसी पढ़ाने वाला, चेयरमैन सर, उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अपनी इज्जत लेके रातों रात एक दहशतगर्दी के साये में, जम्मू की गर्मी में और यहाँ फरीदाबाद और देश के कई जगह और पूरी दुनिया में मेरे भी उस्ताद रहे हैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। और मैंने वो वक्त देखा है कि कैसे एक उभरती सिविलाइजेशन, एक दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन ने अपना घर छोड़ के और आके अपनी एक उसकी जिंदगी गुजारना पड़ी। चेयरमैन सर, अभी शुरुआत है, मैं जम्मू कश्मीर का इकलौता हूं। कुछ और ले लीजिए सर। लैंड रिफॉर्म्स की बात यहां कर रहे थे सर, वहां राजपूत फैमिलीज लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब उनको मालिकाना हक से उनकी सरकारी जमीनें हो गई। दो ही कम्युनिटी जहां वहां ज्यादातर राजपूत और गुजर
लेकिन वो पिछले 70 साल से उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में ढंडोरा फेरा कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। सर, मैं आपको एक और बात बताना नहीं चाहूंगा तो नाइंसाफी होगी। वो कह रहे थे हमारे भाई ऑपोजिशन के मेंबर तनखा जी कि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मेरे कश्मीर के भाई है, और जब जज्बात से बोल रहे थे तो होम मिनिस्टर साहब ने भी उनका स्वागत करा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि स्काई इज द लिमिट? चेयरमैन सर, कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान में के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। वो कभी ऐसे शासक कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद आज उनमें धोबिता नहीं है। सर, जम्मू से कश्मीर से लोग भाग रहे थे, 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फॉरेन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने, तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है। आज जिसकी एक दुकान थी, आज उसकी 2 दुकानें हैं। जिसका एक होटल था, वो दूसरा बना रहा है। आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था, वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। सर, बात क्या है? बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में। सर आज अमन है। मैं कल कश्मीर गया, यहाँ सैटरडे को। सर, आज बच्चे, मैंने खेत में, मैंने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में मैंने बच्चे खेलते देखे। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी जहनियत खराब करते थे। सर, इनसे पूछिए कि इन्होंने कश्मीर के नौजवान का एक किस्म का इन्होंने कत्ल करा है। सर आज मैं गवर्नेंस की बात कर रहे थे यहाँ, आज मेरा भाई बिजली की बात कर रहा था। अरे हमें थैंक्स होना चाहिए होम मिनिस्टर साहब का। अरे जम्मू कश्मीर के बारे में सियासत मत करिए। अरे आज अमन है वहां। अरे आप लोग भी तो बड़े 30 साल के बाद गुलमर्ग में खेल लेंगे, गुलमर्ग में सैरो तफरी करने गए। कल तक आपको कौन जाने देगा? कल तक आप साए के उसके नीचे थे। अरे कल तक 100 रुपया चेयरमैन सर जाता था और 10 रुपए लगते थे। आज स्टेट की बात क्यों करते हैं ये? आज नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। आज सर, अगर सरपंच के अकाउंट में अगर 23 लाख कुछ हजार जाता है, तो सर 23,000 कुछ लाख ही जाता है। किसान के अकाउंट में अगर 6,000 जाता है, साल का 6,000 ही जाता है। सर, बचौले खत्म हो गए। सर टेंडर एक टेंडर 5 लाख का होता था और वो 2 करोड़ पे खत्म होता था। सर, आज पंचायत में 50,000 के लिए भी टेंडर होता है। सर, ये इनको देखना पड़े। अब आंखें देखती नहीं। सर, कैसे आंखें देखेंगी? मैं सर वेस्टर्न राजस्थान में गया, मैं वहां एक मंत्री थे, तो मैंने कैंपेन में पूछा उसको, अपने किसी कार्यकर्ता को, मैंने कहा क्या बात है? कहते जनाब कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते साहब को मंत्री साहब। मैंने कहा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते उनके भाई पंचायत प्रमुख, उनसे बात करेंगे। मैंने कहा कोई और पानी की दूसरी स्कीम आई। कहते नहीं, उनके दूसरे भाई जो है वो जिला प्रमुख है। मैंने कहा कोई और स्कीम आई। कहते उनसे बात करेंगे। सर, देखने वाली आंखें चाहिए। हमें मैं से हम में आने के लिए समय लगता है। सर 10,000 वोट पे एमपी। सर, आज हम बर्दाश्त नहीं करते। 3 टायर में सर ब्लॉक बीडीसी ब्लॉक प्रमुख आज 14 लीडर एक जिले में बने। हमें लीडरी बर्दाश्त नहीं। आज डीडीसी चेयरमैन, आज ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल। आज सर इनको कैसे बर्दाश्त होगा? सर, क्यों बर्दाश्त होगा? सर, कश्मीरी पंडितों का, मैं रेफ्यूजी का बात कर रहा था। सर हमने 70 साल के बाद 5.5 लाख दिया। सर, किसने रोका था? किसने 370 उधर को लेने में थोड़ी रोकता, मतलब जो मर्जी वाला ले गए।
सर वो जो वहां से आए हुए ना, जो माइग्रेंट होता है उसी को मालूम है सर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आज जंगलात कहता है जी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। अरे अट्रोसिटीज एक्ट सर, दुनिया भर के सर, मैं क्या करूं कि डिलिमिटेशन कमीशन सर, भागवड़ कमीशन सर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर कहीं पैर कहीं, मुझे कौन सी सूट करती है सर यहां नहीं सर। यूनिलेटरल सीज फायर के बारे में अगर मैं कह देता आपको तो सर बड़े इन्होंने इसलिए करा था कि हमारी हेजमनी रहे सर। कहीं सर इन्होंने कश्मीर के कश्मीरी को भी, वहां कश्मीरी नहीं सब उसको भी गुजर बोलते हैं सर। पहाड़ी या गुज्जर या डोगरा तो दूर की बात है सर। ये मैं मुबारकबाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि कम से कम सर आज इतने सर टूरिज्म की बात 2 करोड़ सर, 2 करोड़ टूरिज्म सर, 10 चीजों को जीआई टैग सर टूरिज्म के लिए मैं आपको कहूंगा कि बुजुर्ग जो ओल्ड कपल्स हैं, कश्मीर को बेस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं सर। फॉरेन टूरिस्ट सर, आज फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने जम्मू कश्मीर लोग आते हैं सर। ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, हम 5,000 10,000 वोट लेके एमएलए एमपी बनेंगे। अरे भूल जाओ, वो वक्त चला गया, अब वो वक्त आने वाला नहीं है, वो दफना दिया, अब वो नहीं आएगा। अब वो जब हम कमिटमेंट करते थे ना, कहां से लंदन में बैठ के बार्गेनिंग करते थे, मैं चीफ मिनिस्टर बनाओगे तब आऊंगा, अब वो वक्त चला गया। अरे इतनी रेस, मुझे बड़े अफसोस की बात है, अब मैं डॉक्टर फरूक साहब को कहूंगा कि अब बार्गेनिंग अब लंदन से नहीं होगी, अब ओबीसी। अरे ओबीसी से आपने, अरे झाड़ू, अरे लकड़ी वाले से, अरे लोहार वाले से, अरे ओबीसी कम्युनिटी, अरे 70 सालों में आपने पूरे देश में 27%, आपने उनको 2% दिया, आपने सर्वे तक करना गवारा नहीं समझा। ये देश के, मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने सर्वे करवाया और आज इज्जत से बिल ला रहे हैं सर। अपनी पीड़ा वही बयान कर सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी ही पीड़ा ओबीसी की फील कर सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी से है और ओबीसी की फील, वन कैनॉट फील बियॉन्ड हिज जजमेंट सर। ये कहते हैं मुसलमान वहां खतरे में है सर। एक वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी इलाका है देश में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे उनको वो मिलता है आयुष कार्ड पे फैसिलिटी सर। जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहां सबको, छोटे को, बड़े को, किसान को, गरीब को, अमीर को सर 5 लाख का फ्री इलाज है सर। इनको देखते नहीं, आंखें नहीं है सर। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अपर जाति के लोग जो गरीब थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के रहनुमाई में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मिला है सर। इनको नहीं सर, बहुत सारी चीजें, मिनॉरिटी एक्ट, SC ST अट्रॉसिटी एक्ट सर, इनको जुवेनाइल एक्ट, दुनिया भर की सर। आज कश्मीर में मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे कल अनंतनाग में एक प्रोग्राम करा, शिक्षित भारत पे मैंने एक प्रोग्राम सर लोग सुनने आते हैं सर, लोग देखने आते हैं। आज कश्मीर में पहले 2 फसल होती थी, आज 3 हो रही हैं सर। बम्बों के उसमें टेरर में सर वो इतने बम्बारमेंट होती थी कि आप सोच नहीं सकते। आज टेररिज्म की बात करते हैं सर, 1000 बार पाकिस्तान से जब इन्फिल्ट्रेशन होती है 1000 बार सोचता है कि मैं जाऊं कि नहीं, और 99% वो भाग जाते हैं। आज हमारी जो फोर्सेस है बॉर्डर पे इतनी मजबूत है सर। आज टेररिज्म जो है बखलाट में, आज हमारा भाई कोई टेररिज्म की बात कर रहा था कि अभी खत्म नहीं हुई है। अरे आपने टेररिज्म को देखा नहीं। एक जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी कश्मीर में, आप जानते हैं, मैं क्यों नाम लूं कि कौन सत्ता में थे, वो डेड बॉडीज पे, वो लाशों पे हुकूमत करते थे। आज लाशों में कोई हुकूमत नहीं कर रहा। आज कश्मीर के लोग खुद चुनेंगे और खुद अपने लोगों को चुनेंगे, और वक्त आने वाला है। मैं जानता हूं, मैं उनकी प्रॉब्लम को मैं समझता हूं,
अब वो पैसा डाइवर्ट नहीं होगा सर। आज अब वो पैसा डाइवर्ट, अब टेक्निकल एयरपोर्ट में मेरे गेस्ट नहीं आएंगे सर। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी हैं। आज अब पैसा डाइवर्ट, आज जिसको भेजेंगे उसी को जाएगा। आज कश्मीरी पंडित भाइयों को हमने, आज वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी जायदाद छोड़ के भाग गए थे, आज ऐसा कानून भी आ गया है कि आज उनको जायदाद वापस मिलेगी। सर जायदाद वापस मिलने का किसने मना करा? पिछले 35 साल से वो दरबदर थे सर, किसने मना करा उनको? सर आज टेररिज्म के इकोसिस्टम को खत्म करा है। सर टेररिज्म का इकोसिस्टम क्या होता था सर? हम ऊपरी तौर पे टेररिज्म को, आज उनका जो फंडिंग थी, उनका जो नेटवर्क था, उनका जो ओवरग्राउंड वो था सर, NIA SIA ने आज थोड़ा सा, सर जरा जो मुखालफत करते हैं, अरे जरा सिविलियन डेथ, अरे कंपेयर करो ना, पढ़ो ना, किसने मना करा? सिविलियन डेथ का कंपैरिजन करो, नील है। स्टोन पेल्टिंग नील है, आज कैलेंडर नील है, आज सिविलियन किलिंग नील है। अरे थोड़ा थैंक्स तो कर देना चाहिए था। अरे कश्मीर के लोग, आप भी सब लोग मेरे ख्याल से घूम के आए होंगे, डायरेक्ट बताते नहीं है, वो एक अलग बात है। हमें थैंक्स करना चाहिए जम्मू कश्मीर के मामले में कि वहां अमन पीस से बढ़ते हुए हम एक इलेक्शन और सब चीजें होंगी। 3 टायर के इलेक्शन को भी आप इलेक्शन समझिए। शुक्रिया, जय हिंद। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, मैम 4 मिनट्स, 4 मिनट। धन्यवाद सर। पहले वाले स्पीकर ने आदेश के अनुसार ज्यादा समय आगे और बढ़ा देंगे। धन्यवाद सर। आप मालूम है मुझे देंगे, आप मुझे 2 मिनट। सर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो भी बिल आया है, रिजर्वेशन का हो, रीऑर्गेनाइजेशन का हो, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। 5 अगस्त 2019 का दिन मुझे याद है, जब हमारे सामने बैठे हुए अमित शाह जी होम मिनिस्टर, उन्होंने इसी सभागृह पटेल, पुरानी बिल्डिंग थी, पटेल पे बोला था, आश्वासन दिया था कि जैसे ही जम्मू और कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहां पे हम चुनाव भी लेंगे और उनको स्टेटहुड भी देंगे। वो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अभी 4 साल हो गए। एक तो स्थिति सामान्य नहीं है, ये कबूल करो, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है, हर रोज टारगेटेड किलिंग हो रहा है, आतंकवाद थमा नहीं जा रहा है, और फिर आप चुनाव भी नहीं ले रहे हैं, ना चुनाव ले रहे हैं, ना हमारा स्टेटहुड वापस दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर ये हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, वो जम्मू कश्मीर को अपनी ही रियासत मांगने के लिए आपके सामने आज गुड़गों पे आना पड़ता है। वो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर जो दावे किए थे उन्होंने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो खोखले हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने 2 जो विषय हम मांग रहे थे बार बार, और जिसकी चर्चा, क्योंकि मैं हर रोज हर 15 दिन में जम्मू कश्मीर जाती हूँ, तो वो बोलते थे हमें कुछ मत दे दो, हमें रियासत वापस दे दो और हमें हमारे चुनाव करवा दो। ये 2 चीजें वो चाहते थे, और वो दोनों भी चीजें देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उसके लिए मैं आपके द्वारा सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने हाईकोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने दिया था कि हम 31 दिसंबर 2023 के पहले हम चुनाव लेंगे। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि जब तक 30 सितंबर 2024 तक ये चुनाव होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी उनके मुंह पे चपराक है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात यहाँ पे बार बार कही गई, कश्मीरी पंडित हो, PAJK के लोग हो, ST SC, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर, ये सभी लोग जब जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग बनते हैं, उनको जब आप बोलते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया,
आइडिया ऑफ इंडिया कहाँ गई जब आप इन लोगों को साथ में नहीं लेंगे? कश्मीरी पंडित 33 साल से 33 ईयर्स से विस्थापित होके अपने ही देश में रह रहे हैं। सर, आपको मुझे ये बताना बहुत दुख की बात होती है कि उनके बहुत बड़ी जगह लोगों से हम मिले, लेकिन जब अपने ही देश में विस्थापित होकर कहीं रहना पड़े तो ये सबसे दुख की बात होती है, और वो कश्मीरी पंडितों को करनी पड़ी। जब तक उनको पूरी सहूलियत से घाटी नहीं ले जाते तब तक आइडिया ऑफ इंडिया का दावा अपना खोखला रह जाएगा। जो भी उन्होंने दिया है 2 जगह कश्मीरी पंडितों के लिए, उसमें से एक महिला है, एक पुरुष है, और एक हमारे SC ST बकरवाल के लिए। इट्स टू लिटिल टू गुड। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे पटल पे रखना चाहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आए थे तो राहुल जी ने हर कश्मीरी पंडित का दुख महसूस करने की कोशिश की। जगती में जहाँ पे रिहेबिलिटेशन कैंप है उनके, वहां पे वो गए, उनको मिले वो, और सब लोगों से बात करके उनको गले लगा के उनका दुख दर्द समझने की कोशिश की। 370 की बात जब निकलती है तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो स्वयं, मैं बताना चाहूंगी कि स्वयं एक कश्मीरी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित साहब। और सर, 1 मिनट सर, लेकिन उनको भी कटघरे में खड़ा करने के लिए कसर नहीं अमित शाह जी ने। मुझे बहुत दुख होता है जिस तरह से उनके ऊपर चर्चा की जाती है, जिस तरह से उनके ऊपर कुत्सित नजर से बोला जाता है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाला जमाना कभी माफ नहीं करेगा आपको, क्योंकि जब कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होना ये तय नहीं हुआ था, तब फारूक अब्दुल्ला के कहने से हमारे पंडित नेहरू जी, हमारे वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने फैसला लिया था, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसके ऊपर साइन नहीं किया। जो हमारा ऑर्डर होता है उसके ऊपर साइन नहीं किया। तो इसलिए फिर जब तक जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं कबाइली, वो जब तक एयरपोर्ट तक आ गए थे तब उन्होंने बोला कि अभी मैं साइन करता हूँ। फिर साइन करने का निर्णय लिया गया और ये कबाइली लोगों के साथ फिर उन्होंने एक हमला कर दिया। सर, जम्मू कश्मीर को अगर इस देश का अभिन्न अंग बनाने का श्रेय अगर इस देश में किसको जाता है तो मैं सभी आपको नम्रता से कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में आया। और ये सच है। अगर सच नहीं सुनना पसंद करोगे तो मत सुनो, लेकिन सिर्फ पंडित नेहरू जी ने ही जम्मू कश्मीर को अपने स्टेट देश में संलग्न कर दिया। हमारे परिवार में, हमारे परिवार में जब कोई पुरुष बहुत अच्छा काम करता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया, और पूछते हैं। हमें भी सबका अनुभव आता है। इतना बेचारे ने किया होता है, पूरे घर के लिए, बच्चों के लिए किया होता है, उनको ही आप आग दिखाओगे, पूछोगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये सही बात नहीं है। कम से कम उनकी अवहेलना मत करो, इतना ही मेरा यहाँ पे कहना है। आंतरिक सुरक्षा के लिए 2 मिनट में कहूंगी सर मैं। आंतरिक सुरक्षा जो है, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए हैं, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं जाते हुए मैं बोलूंगी कि फरवरी 2021 में स्वर्गीय आकाश मेहरा, जो श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबा का मालिक था, वो आतंकी हमले में मारा गया। गुलाम अली साहब, मैं सब लिस्ट दे देती हूँ आपको कितने लोग मारे गए। वो मार्च 2025 लावेपुरा में एक आतंकित हमले में 3 जवानों की शहादत हुई। मार्च के महीने में म्युनिसिपल काउंसिलर और एक जवान सिपाही को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये सब बातें सरकार के खोखले दावों को खुला कर देती है। सर, कांग्रेस का नाम लेते हैं, लेकिन जब अत्यंत कठिन परिस्थिति थी और जब आतंकवाद का थैमान मच रहा था, तब श्रीनगर में हमारे कितने लोग मारे गए कश्मीर कांग्रेस के। इसका अगर लिस्ट आपको चाहिए तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगी। सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग इसमें, मंत्री, स्पीकर सब मरे हैं उसमें। और हमारा कांग्रेस का खानदानी हम था, डीएनए ही यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ हर एक ने जान दी है इस देश के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, हर एक ने जान दे कर यहाँ तक आइए। और ये आजकल के बच्चे पूछते कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे ये देश अगर खड़ा है, ये देश में आप बोल रहे हो, इस देश में आप बोल रहे हो, तो ये हिम्मत, ये ताकत आपको कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। मिलिटेंसी के टाइम में आप कहाँ थे तब? सरकार के दावों को झुटलाते हुए बहुत मासूमों ने अपनी जान गवाई। सर, इन्होंने बोला, गुलाम अली साहब का मैं ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि ये अपने गवर्नमेंट, अपने सदन में एकमात्र सदस्य है कि जो जम्मू कश्मीर से आता है, जम्मू से आते हैं। पहले तो मैं उनको नहीं जानती थी, अभी मुलाकात हो गई। तो
उन्होंने बोला कि अभी एक दुकान था, 2 दुकान हो गए, ठेकेदारी बढ़ गई। अरे ठेके किसको देते हैं गुलाम अली साहब? गुजरात के लोग लाके उनको ठेके देते हैं आप। कहाँ यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं देते हैं आप। सिर्फ गुजरात के लोगों को ठेके दिए जाते हैं, उनके पैसे भर जाते हैं। क्या करते हैं आपका हिम्मत कैसे? आप हॉर्टिकल्चर है, सरकारी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री मानी जाती है, सभी जगह पे यही हालत है। आज के दिन में हमारे 10,000 लोग हमारे घर में बैठे हुए हैं जो twice the time. यस सर। और मैं बताना चाहूंगी सर कि जो अभी बात किया किसने, इंदिरा जी के लिए भी बोला हमारे विजय साई रेड्डी ने। इंदिरा जी उन्होंने जो थी, जिन्होंने पहले कश्मीर के लिए रास्ते तैयार करने का काम किया। ऑल रीजन्स वेर कवर्ड बाय मेडिकल कॉलेजेस यूपीए। अमित शाह जी बोल रहे थे कि श्रीनगर, इसमें जम्मू कश्मीर में आईआईटी आईआईएम नाम लेते हैं। आईआईटी आईआईएम की शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। हमने किया है वहां पे आईआईटी आईआईएम। 4 लेनिंग जम्मू से लेके श्रीनगर तक हमने किया है। 33% रिजर्वेशन हमने किया है। रिहेबिलिटेशन पैकेज मनमोहन सिंह जी ने दिया है और उसमें हर कश्मीरी पंडित वहां अभी भी रहता है। और उनको इन्होंने 5 लाख रुपए देने का शब्द दिया था, वो भी नहीं दिए। और अभी पिक्चर निकालते हैं कश्मीर फाइल्स। कहाँ की कश्मीर फाइल? पहले अपनी फाइल खोल के देखिए, ये बताओ। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बाला साहब ठाकरे, इन्होंने महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडितों के लिए पहली बार रिजर्वेशन दिया था। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। महाराष्ट्र वॉज द ओनली स्टेट कि जहां पे रिजर्वेशन मिला वो बाला साहब ठाकरे ने दिया था। जरा फर्स्ट टनल कांग्रेस ने किया है। और ये सब करते हुए भी मैंने जैसे बोला कि परिवार के बच्चे जैसे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। जब जो दुख और दर्द होता है वही दर्द हमें होता है। ये जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अनाप शनाप करते हैं, बहुत बुरा लगता है। मैं एक ही अंत में कहूंगी कि जम्मू कश्मीर में जो नॉमिनेशन है 3 सीट्स का आप कर रहे हो, उसमें लिमिट मत करो सर, उसको लिमिट मत करो। क्योंकि जो पाकिस्तान में जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको मुहाजिर बोलते हैं और हमें यहाँ मुहाजिर नहीं बनाने हैं। हमारे लोग हैं वो, उनको मुहाजिर क्यों बनाए हम? तो उनको मत बनाइए। उनको अगर आप चाहते हैं तो गुज्जर हो, हमारे SC ST हो, उनको मुहाजिर मत बनाए। सिक्किम में आपको मालूम है सर, सिक्किम में सांघा 32 किया है। वैसे अगर कर सकते हैं तो सिक्किम में 32 जैसे किया है सांघा, वैसे भी हम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही बात करना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं तो इस तरह से कोई ना बोले कि जिससे हमारे लोगों को कहीं ना कहीं कम दिखाने का, नीचा दिखाने का काम हम करें। ये पार्लियामेंट है, बहुत उच्च सदन है, सर्वोच्च सदन है। यहाँ पे एक दूसरे का सम्मान हमने करना चाहिए। जिस तरह से पहले कुछ भी नहीं हुआ, अभी हिंदुस्तान का जन्म हुआ ऐसे बोला जाता है, ये जरा थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। हम धन्यवाद देते हैं। I have given her as against 4 minutes, 11 minutes. धन्यवाद सर। सर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हर 15 मैंने आपको समय क्यों दिया? जी थैंक यू सर, धन्यवाद। जब जम्मू एंड कश्मीर में आप श्रीनगर में थी जी, हंस रही थी, आनंदित थी, मैंने आपको फोन किया था जी। अब वो भी एक तस्वीर थी जिसका आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, मुझे बोलने नहीं दे रहे और आपने मुझे संकट में डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा DNA ऑथेंटिकेशन की बात करूं नहीं करूं? आपने तो कह दिया। नहीं सर, यू आर ऑलवेज देयर विद अस। डॉक्टर M. Thambidrai. Mr. Chairman, sir, today 3 minutes. Honorable Home Minister Sri Amit Shah brought 2 bills for consideration and passing. One is Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Second bill, Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. Sir, our ADMK party is always for social justice. Because in this bill, they brought one aspect regarding other backward classes declared as the government from time to time. The provision of the said category of social and educational backward classes. So socially backward classes is the, no, you're as a lawyer, you know that is the accepted thing.
Educationally backward, it may change. It's not a permanent thing. Anybody can, but socially, our caste system is one of the part system what we are facing in India. That is why, especially our ADMK party is for social justice. Our former Chief Minister, MGR, made reservation 69% for the backward classes and scheduled caste. Same way, our former Chief Minister, Purachit Talavi Amma Jayalalitha also insisted to get the social justice, the reservation for backward classes, socially backward classes, and scheduled tribe, and made included in the 9th schedule of this constitution as given. That is why she has called Purachit social justice is a social, that is for social warrior. That is our objective. Therefore, in that way, if they are included in that sense, if they are added, now the present government has recognized socially backward. Therefore, socially backward, we are appreciating that word which has included socially backward, which is our ADMK's party's objective. And also, the second bill, when they increased the reorganization, they said reservation for the scheduled caste and scheduled tribe. That also they mentioned. That is also our Dravidian party's objective is to see that so socially oppressed classes like scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, socially backward classes. These are things which I have to achieve. For that, in that respect, I am appreciating that. At the same time, I am requesting the present government, because there is social order is there in this Jammu and Kashmir, they have to conduct the yearly election for that. Democracy must be restored in that area. That is our system. I am hoping that the government will come forward and conduct elections. Biplab Kumar Dev. Sir, 6 minutes. माननीय सभापति महोदय, मैं ये बिल 2 को समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे अपने समय 6 मिनट दिया है और मैं इस कश्मीरी पंडित के साथ साथ जो हिंदुस्तानियों को वहां निर्मम तरीके से अत्याचार करके मार दिया गया है, बहुत सारी बच्चियों को, माताओं को, बुजुर्गजन को, उस आत्मा को स्मरण करते हुए मेरे 6 मिनट से 1 मिनट मैं ओम शांति के नाते देना चाहता हूं। मैं उस आत्मा को स्मरण करना चाहता हूं, विस्थापित हुए, दुनिया में बहुत विस्थापित होते हैं, किंतु जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडित को विस्थापित किया गया, उसका जो दर्द है वो हम सभी लोगों को उसका एहसास करना चाहिए। बिल आते जाते रहते हैं, ये 2 अमेंडमेंट आए हैं, उसमें आरक्षण है, इसके बारे में विस्तारित बात हुई है, किंतु हमारे न्यू जनरेशन को इस उत्सव सदन से आज मालूम चलना चाहिए जो कश्मीरी पंडित के साथ और बाकी सब लोगों के साथ उस समय क्या हुआ था, क्यों हुआ था। उस एहसास को आज पूरे देश को समझना चाहिए। और आज ऐतिहासिक दिन है, 5 और 6 अगस्त 2019 में जो 370 और आर्टिकल 35 को विलुप्त कर दिया गया है सदन के माध्यम से, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज ऐतिहासिक दिन इसी के लिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगाया, उस समय जो सिद्धांत लिया गया था वो सही है। 70 साल लगा
इस आत्माओं को स्मरण करने के लिए, इनके साथ न्याय करने के लिए हम मानवाधिकार कमीशन की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं। आज उन आत्माओं को शांति मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार आए तब जाकर उस आत्माओं को शांति मिला, इनका अधिकार आज मिल रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, हम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वो छोटे रहते हुए जम्मू कश्मीर के 370 आर्टिकल 35 और कश्मीरी पंडित के ऊपर अत्याचार जो मैंने अपने परिवार लोगों से सुना है, बाद में पढ़ाई लिखाई की स्वाभाविक तौर पर वो आना है, किंतु जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को अत्याचार किया गया था और विस्थापित किया गया था, और आज कितने दिन बाद 1947 में देश स्वाधीन हुई है, और जब भी पाकिस्तान के साथ वार हुआ, चाहे 71 का हो चाहे 62 का हो, और देश स्वाधीन तब 1947 में हुआ तब हो, तब बार बार उस कश्मीरी पंडित, जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी लोगों के ऊपर अत्याचार कर करके इनको उस जहां हमको भूस्वर्ग जिनको हम मानते हैं, हमारा मुकुट मानते हैं, भारत का ताज मानते हैं, इनको बार बार एक दहशतगर्द में, और जो सोच में बैठे हुए लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनके कारण से हमारे देश के संविधान, हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की महिला, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की सोच, हमारे देश के सनातन, सबको लगातार खत्म कर दिया गया है। आज यहां से बोलते हैं बहुत सारी चीज, किसने किया किसने नहीं किया वो बात नहीं है, बात वह है उनके साथ न्याय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह जी ने किया, वो सच है, वो सच चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने आपको बोला था 1 मिनट में वो शहीदों के लिए दूंगा, तो मेरे पास 1 मिनट था, मैं यही बात अपने रुकूंगा। आपको धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी, 3 मिनट। The reply of the Home Minister in the Lok Sabha expresses an inclination to restore normalcy in the region, to provide justice to the displaced and deprived, and to deal effectively with the menace of militancy. Some militancy is that cancer that has constantly been eating away into the beauty, the splendor, the magnificence, the peace and happiness of our paradise on earth. Sir, history has given the world 2 formulae to deal with such situations. Number 1, take up arms. And number 2, to extend an arm. One formula was given by Hitler and the other was given by Mahatma Gandhi. So now we have to decide which of them is the more effective tool. Mahatma Gandhi's formula recommends winning the faith of people, to help, to assist, to nurture through love. To win the faith of people, you need to walk into their hearts. You need to understand their feelings, their sentiments, pains, problems, aspirations. For this, you have to listen to the voice of people. Sir Martin Luther King has said very well, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. So today, internet is vital for listening to the voice of people. Internet shutdowns shut down the voice of people. For normalcy to return, the government must acknowledge the importance of an open internet. When we talk about empathy and feeling the pain that people endure, what pain can be greater than a severe winter without electricity, especially in the rural heartland? So my last point, this area
has seen massive political and communal conflict, the repercussions of which are still being felt across generations, not just by the displaced, and the deprived, but also by the rest of the population. It has left the region with a huge mental health burden, sir. The National Mental Health Survey conducted in 2015-16 showed probable depression 41%, probable anxiety 26%, probable PTSD 19%. Sir, Telemanas has been initiated in Kashmir, a provision of telepsychiatry services. Launched on 4th November 22, the center has so far received 4,000 calls. People with mental illness from every district are seeking professional help. So please give me just 1 minute. Conclude, please. Thus, it becomes extremely crucial to hear the plight of people and work according to their grievances. When we create hope and opportunity in the lives of others, we allow love, decency, and promise to triumph over cowardice and hate. Sir, this bill is about acknowledging the beating hearts of Jammu and Kashmir. Let us bridge the gap between promises and reality, as their dreams deserve to be nurtured, not neglected. So when we talk about GDP, let us talk about gross domestic happiness in the valley. I will end my speech with a couplet. गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहां वो हर 3 महीने में जाते हैं सर और सिचुएशन को असेसमेंट करते हैं, और उन्होंने कहा था कि वो वहां हर चीज उनको सुखी समाधानी नजर आती है। तो सर मैं इतना ही कहूंगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पे रौनक, वो समझती है कि बीमार का हाल अच्छा है, तो कहीं बीमार का हाल वो अच्छा ना समझते हो। धन्यवाद। इतना कहती हूँ और जगह लेती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि जी, माननीय श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि, 3 मिनट। माननीय महोदय, करती हूं कि आज एक महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर आरक्षण और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 जैसे महत्वपूर्ण न्यायप्रिय विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। महोदय, पहले तो मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज न्याय की जीत हुई है, मोदी जी के जन भावनाओं की जीत हुई है। आज उच्च न्यायालय ने भी धारा 370 के पक्ष में निर्णय देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। देश आजाद होने के बाद भी 70 सालों में वहां समाज की आधी आबादी महिलाओं को न्याय नहीं मिला। घुट घुट कर जीवन व्यतीत करने वाली महिला और पुरुषों को जन्म देने वाली महिलाओं को न्याय नहीं दिया गया, जिनकी लगातार अनदेखी की गई है। यह कहूं कि उन पीड़ित महिलाओं को शादी होने के बाद अपनी जन्मभूमि से बेदखल कर दिया जाता था, उनकी परिवार की मूल जड़ों से उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 1950 में जम्मू कश्मीर में घोर संकट आया, तब पंजाब से 201 विशेष समुदाय के महिलाओं, बच्चों और पुरुषों सहित परिवार सहित लाए गए। संकट खत्म होने के बाद उन 200 महिलाओं, बच्चों, पुरुषों सहित लोगों को ना तो वहां नौकरी मिली, ना तो वहां नागरिकता मिली और ना ही रहने को छत मिला। उन बच्चों को और उन महिलाओं को नारकीय जीवन जीना पड़ा। महोदय, ऐसे संकट काल में सबसे ज्यादा यदि पीड़ा किसी ने भोगी है तो वहां की महिलाओं ने भोगी है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बेदखल किया गया है। पुरुषों से ज्यादा वहां महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। तब ये बहन अभी कह रही थी कि उनको मत भूलो, जिन्होंने देश में बड़ी भूमिका निभाई। तब ये चुप थे क्या जब महिलाओं को वहां पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और परिवार को वहां से भगाया गया? तब वहां के और यही हिंदुस्तान के वर्तमान लीडर सो रहे थे या कि विदेश में रह रहे थे? ये जवाब उन्हें देना चाहिए यहाँ पर, जो कि अभी इतनी हिमाकत की बात कर रही हैं। वो मैं कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 समाप्त होने के बाद में वहां की महिलाओं को सबसे ज्यादा न्याय मिला है।
उनका जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प के कारण, माननीय गृह मंत्री जी की कार्यकुशलता के और निष्पक्ष कुशल रणनीति के कारण आज अजय परिणाम आ रहे हैं, जो कि आज कश्मीर में निर्भय होकर संपन्नता बढ़ रही है। माननीय महोदय, मुझे 1 मिनट का और मौका दीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मैं विपक्ष को एक और आईना दिखाना चाहती 2 लाइन में कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा था। तुमने आंखों में देखा नहीं वह आंसुओं का समंदर। माननीय महोदय, सच कहूं तो सदी में एक महामानव आता है और वो महामानव आज मोदी के रूप में पूरे हिंदुस्तान को मिला है, जिसने वर्षों से जम्मू कश्मीर में महिलाओं के पैरों में चक्री बेड़ियों को आज धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को आरक्षण संशोधन बिल और 2023 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन संशोधन को लाकर काट दिया। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ। जय हिंद। थैंक यू। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, 3 मिनट। Honorable Chairman, sir, I rise in the favor of these 2 bills, the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganization Amendment Bill. Thank you very much for allowing me to speak on this historic bill. The passage of this bill shall undo the injustice that has been done to the people of Jammu and Kashmir. Those who oppose this bill should understand what people of this country want. I would like to quote a शेर by नवाज देवबंदी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आप ही को दिखा रहा था। Sir, it was the year 2022. I was at Lal Chowk at Srinagar, the infamous Lal Chowk, which was once the townhouse of terrorism. It was a place that remained heavily guarded and where peace and freedom were unheard of. I happened to be at that place and had the pleasure of hosting the first ever live television debate from Lal Chowk. And when I was doing that show, sir, I saw tirangas everywhere. And I was compelled to think of our Honorable Prime Minister when he undertook the Ekta Yatra in 1991 and hoisted the tricolor at Lal Chowk at a time when it was unimaginable to hoist even a single tiranga, let alone a rally. Sir, I remember I was 10 years old and it left an imprint in my mind which still stays with me today.